कंपित हेब जोरंदा महिमा गांधी। न्यूज हेडलाइंस प्रायोजक विमल कुह भाषा केसरी। वर्तमान समय एक बड़ खबर आरंभ करबा बुलेटिन मिलिला गोपालंक डायरी गोपालंक क्वार्टर्स रु आज मिली किछि गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र। आज पाखापाखि 4 घंटा धरी गोपालंक क्वार्टर्स रे तन्न तन्न करी जांच करथिले क्राइम ब्रांच अधिकारी एवं एई जांच समय गोपालंक एक डायरी मिलिथिबा जणा पड़िछि। गोपालंक क्वार्टर्स रु आज किछि गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र मिलिथिबा बेले ता सहित एक डायरी मध्य मिलिछि। हाथलेखा कागज एवं डायरी मिलिथिबा कहिछि क्राइम ब्रांच। जबत डायरी को एबे जांच करुछंती क्राइम ब्रांच अधिकारी। डायरी रे किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना मध्य थाई पारे। सेपटे पायखाना टांकी रु मिलिथिबा चिठी नै क्राइम ब्रांच करिछि खुलासा। गोपाल मानिछंती जे से निजे ही लेखिथिले चिठी अर्थात जो चिठी खंड बा टुकुड़ा पायखाना टांकी रु बाहरिछि से चिठी को गोपाल निजे लेखिथिले एक कथा को गोपाल स्वीकार करिछंती। पायखाना टांकी रु पाखापाखि 20 रु अधिक कागज टुकुड़ा मिलिथिला जेउथिरे नाली रंगरे किछि लेखा जाइथिला। अन्यपटे चिठीर सत्यासत्य जानिबा हैंडराइटिंग ब्यूरो को मध्य पठाजिबो। यारि भितरे आउ एक बड़ खबर आसुची गोपालंक डायरी लागिछि क्राइम ब्रांच हातरे। कारण आज माराथन भावरे पाखापाखि 4 घंटा धरी गोपालंक क्वार्टर्स रे उपस्थित रहिथिले क्राइम ब्रांच टीम रो अधिकारी एवं विभिन्न स्थान विभिन्न जगह को तन्न तन्न करी जांच करथिले। गोपाल रहुथिबा क्वार्टर्स रे कौन रखुथिले कौन सबु रहिछि से संपर्क में तन्न तन्न करी जांच करिबा परे आज एक डायरी मध्य मिलिथिबा जणा पड़िछि। डायरी संपर्क में अधिक सूचना पाई नभेश महांती आम स्पेशल करस्पोंडेंट आम सहित जोड़ुछंती। नभेश डायरी मिलिछि एवं डायरी रे सेमिति किछि लेखा थाई पारे कि डायरी लेखुथिले कि गोपाल ए तो निश्चय चर्चार विषय। मोटामोटी सूचना कौन अछि डायरी को नै आपनक पाखरे? बिल्कुल विभु जदि कहबा जदि डायरी मिली तेबे से डायरी संख्या गोटे नुहे डायरीज लिखा जाए एकाधिक डायरी मिली एवं जदि गोपाल डायरी लिखबार अभ्यस्त थिबे जदि से डायरी लिखुथिबे तेणु निहाती निजर मन कथा को से कागज रे उतारी थिबे एवं से मन कथा गुडी को एबे क्राइम ब्रांच पढ़िबा आरंभ करि सारिछि एवं क्राइम ब्रांच रो टॉप ऑफिशियल माने से डायरी को ऑलरेडी पढ़ी सारे तेज से कौन सब उल्लेख रही से बाबद में क्राइम ब्रांच पक्षर किसी सूचना दि जाए ना किंतु गोटे कथा क्राइम ब्रांच स्पष्ट कर गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र विशेषकर सरकारी क्वार्टर और जो डेस्क रही जो थानार जो डेस्क रही जो से बसुले से जबत होती कागज पत्र और डायरी तेज डायरी को लेकिन सस्पेंस जारी रही वास्तविक से डायरी रे कौन रही नब दास को हत्या करने पूर्व से डायरी रे एमिति किछि तथ्य उल्लेख करिसंते कि जहा कि लीड करथबो नब दास को हत्या संपर्क रे किंबा से डायरी रे एमिति कोन गुड रहस्य रहिछि जहा को कि क्राइम ब्रांच वर्तमान पर्दाफाश करबा चाहुनी केवल डायरी नो जदि हमें क्राइम ब्रांच रो प्रेस नोट कथा कहबा एकाधिक एमिति डेवलपमेंट होइछि जहा को नै कि ए प्रेस नोट रे किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना मते दे जाइछि एवं से मुताबिक जो 22 खंड कागज टुकुड़ा एयरपोर्ट थानार पायखाना टांकी मिलता से 22 खंड कागज टुकड़ा को एकाठी करागला ताकू संपूर्ण चिठी तो पढ़ी हेबु नहीं कहि परिबा किंतु एकाठी करागला गोटे चिठीर स्वरूप दियागला A4 साइज पेपर जो जेतु थिला ताकू सजैक रखागला एवं ताकू गोपाल निजे स्वीकार करिछि जे वास्तविक सही कागज टुकड़ाटी हेउछि तार गोटे चिठी एवं से चिठी रे तिबा हस्तलिखन ता निजर तेणु से ताकू स्वीकार करछि एक कथा पुलिस पक्षर कहा जाइछि। तेणु नियति एबे जदि हस्तलिखन तार बोलिकी से कन्फेस कर तेणु तापर भी हैंडराइटिंग जो एक्सपर्ट अच्छी से प्रेजेंस रे याको प्रिजर्व करागला चिठी रे कोन सब लेखा जाइथिला बा जो कागज टुकड़ा बाहरिछि सेथिरे कोन सब उल्लेख रहिथिला पढ़ी हो नथिले मध्य परवर्ती समय रे होतो फोरेंसिक टीम जांच करी कोन लेखा जाइथिला से संपर्क रे कोन सूचना दउछि ता ऊपर नजर रहिबो एवं अन्यपटे आज क्राइम ब्रांच पक्षरु मध्य दर्शक बंधु स्पष्ट करा जाइछि कि जो कागज टुकड़ा बा जो चिठी पायखाना टांकी रु बाहरिथिला से चिठी रे गोपाल ही सबकिछि लेखिथिले गोपाल एक कथा स्वीकार करिसंती एवं अन्यपटे आज जेतेबेले गोपालंक क्वार्टर्स रे लंबा समय धरी जांच करथिले क्राइम ब्रांच अधिकारी एवं टीम से समय रे गोपालंक क्वार्टर्स रु अनेक कागज पत्र जबत होइछि एवं तारी भितरे किछि डायरी मध्य क्राइम ब्रांच हातरे लागिछि एवं अनुमान करा जाई पारे डायरी रे मध्य किछि तथ्य देई थाई पारंती गोपाल जदि गोपाल चिठी लेखुथिले जदि तांकर कोन होई जाय ताहेले पूरा जगत जानू ए देश जानू मु काहे की हत्या कली तेणु एई आशंका मध्य करा जाई पारे
बा संभावना देखा जाई पारे कि गोपाल पूर्व डायरी रे मध्य होय तो किछि लेखि थाई पारंती नभेश जदि कागजरे लेखुथिले चिठी लेखुथिले ताहले निश्चय डायरी रे मध्य लेखि थाई पारंती एई संभावना तो बहुत देखा जाउची। बिल्कुल बिबू आप सठिक दिग को इंगित करिसेंती एवं गोपाल जदि निजर जो ये घृण्य काम कला जहाँ जो कि से निजक कहीं घृण्य काम करला तो से जगत को दुनिया को जनवा निज पाखे चिठी धरिक बुलूला तेणु निहाती एवं से डायरी रे तो किसी ना कि मेनसन कर कारण जदि से डायरी लेखुला तेज से डायरी रे किसी ना कि सुरक्षित थी कारण तार हुए तो सन्देह थी हुए तो से जो कागज रही न मिल पारे क्या कि तार से कागज कौन प्रकार मिसिंग हो जाई पारे किंतु जेतेबेले से जड़े पुलिस अधिकारी जड़े एएसआई तेणु जेतेबेले तार घर रेड हम जेतेबेले तार ऑफिस सरकारी क्वार्टर रेड हम से समय रे पुलिस को सेमिति किछि ना किछि से सुरक्षा छाड़ी जाइथिबो जे वास्तविक से काहे के कांड भिआइला बा काहे के भांड ए जो कांड करिया पई तार साहस होला नियति एबे गोपालर ए जो कृत्य रहिछि ये कृत्य दिन को दिन कहबा जे कृत्य पर पर्दा हटुछि एवं अनेक किछि रहस्य ए डायरी रे रहिछि आमे कहि परिबा कारण ए डायरी क्राइम ब्रांच रो टॉप ऑफिशियल माने ऑलरेडी पढ़ी सालेनी एक कथा आमे कहि परिबा किंतु से डायरी रे वास्तविक कोन रहिछि नवदास को हत्या करिया पूर्वरु से डायरी रे सेमिति किछि कथा लिखितला कि गोपाल तेणु से डायरी की भी वर्तमान हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को जरिया रे हैंडराइटिंग ब्यूरो को पठा जिवो सेतरे जो चिट जो रहिछि लेटर जो फॉन्ट रहिछि बा जो हस्त लिखन रहिछि सेगुडी को मैच करा जिवो तेणु निहतेबे गोपाल विरुद्ध रे धीरे धीरे करिकि एविडेंस मिलिबा आरंभ होइछि एवं सबुठ बड़ कथा रहउछि जो मोटो जो उद्देश्य जो कारण पाई कि गोपाल नवदास को हत्या करिया पई पछैला नै बा नवदास को हत्या कला से कारण गोपाल तो तार स्टेटमेंट रे कहि सारछि किंतु ताको प्रूफ करबा लागि एई सब जो एविडेंस मिलुछि एगुडी को गोटे गोटे बहुत बड़ बड़ रोल प्ले करिवो तो नियतेबे आगामी दिन रे जणा पड़िवो जेतेबेले कोर्ट रे चार्जशीट दाखल करा जिवो वास्तविक से डायरी रे उल्लेख कोन रहिछि सरकारी भाबे ता जणा पड़िवो अन्यथा क्राइम ब्रांच जेतेबेले प्रेस मीट करिवो हुए तो से समय रे डायरी रे कोन तथ्य रे ता सामना आसीबो किंतु ए डायरी एवं ए जो घरु जब्त हेतवा किछि कागज पत्र जाहाकू कि गुरुत्वपूर्ण बोली दर्शाउछि बिल्कुल बिल्कुल नवेश यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण एवं डायरी रे जदि सेमिति किछि उल्लेख रही थाए ताहले निश्चय क्राइम ब्रांच को बहुत किछि लीड मिलिबो एवं आपण जेमिति कहउथिले हत्या करिबा कथा को गोपाल स्वीकार करिसंती किंतु से काहे कि हत्या कले एहा एबे मध्ये प्रश्नवाची एवं सारा राज्यवासी मन रे मध्ये प्रश्न कि गोपाल काहे कि हत्या कले हत्या करिबा पछर कारण कोन होई थाई पारे गोपाल जे सब कथा कहउचंती ताहा वास्तव रे सत कि ताकु ने अनेक प्रश्न एवं अनेक द्वंद्व एवं एहारी भितर आमे देखुचे क्राइम ब्रांच 4टी टीम गठन करी विभिन्न जगह रे जांच करूची विभिन्न जगह रे पहुंची गोपालंक संपर्क गोपालंक बंधु गोपालंक गाँ लोक ए तमाम दिगरे पचरा उचरा करा जाउची एवं गोपालंक संपर्क रे विभिन्न तथ्य निया जाउची गोपालंकर जीवन कि भली थिला गोपाल जे मानक सहित सांग हेउथिले सेमानक सहित संपर्क कोन थिला गोपाल पाखरे से भली किछि हाव भाव पूर्वरु थिला कि ए तमाम दिगरे आमे देखुचे गोले घंटी वर्तमान क्राइम ब्रांच तदंत करूची एवं आज मध्ये आमे देखिले गोटे पटे गोटे टीम ब्रह्मपुर रे पहुंची गोपालंक गाँ रे पहुंची तन्न तन्न करी जांच करिछि विभिन्न जगह रे पहुंची किछि लोकंक प्रतिक्रिया मध्ये नेइछि एवं अन्यपटे झारसुगुड़ा रे मध्ये आमे दिन तमाम रो चित्र देखुचे केउठी गुली खोजा जाउछि तो केउ टीम गोपालंकु नै सांगरे जाई विभिन्न जगह बुलुछि जेमिति आमे थाना रे मध्ये देखिथिले फांडी रे किछि कागज टुकड़ा मिलिथिला गाड़ी रु एवं ता पूर्वरु अर्थात गोपालंकु जेतेबेले थाना को अना जाइथिला ता पूर्वरु गोपालंकु नै क्राइम ब्रांच गोपालंक क्वार्टर्स को जाइथिला अर्थात जेउठी गोपाल रहुथिले कारण ताहा मध्ये सबुठ एक बड़ जगह बा बड़ दिग कुआ जाई पारे गोपाल जेउठी सोउथिले जेउठी रहुथिले सेठी कोन रणनीति होउथिला कि गोपाल सेही जगारु षडयंत्र करुथिले कि गोपालंक पाखकु आउ किए आसुथिले कि ए तमाम प्रश्न वर्तमान सामना रे आसीछि एवं एहारी भितरे डायरी मिलिबा निश्चय ए होछि ए घटनार बा ए मामलार गुटे बड़ खबर आमे कहि परिबा जदि चिठी रे गोपाल उल्लेख करूछंती ताहेले डायरी रे मध्ये निश्चय एमिति किछि उल्लेख थाई पारे जहा काहे कि हत्या कले गोपाल तारो कारण स्पष्ट करि पारे नभेश डायरी तो मिली एवं आम देखुचे चिठी डायरी ए सबूर गुरुत्व बढ़ुची अर्थात अतीत में कौन करते गोपाल हत्या पूर्व तार गुरुत्व बढ़ुची अर्थात क्राइम ब्रांच एवं आशंका करुच्ची कि गोपाल जो सब बयान दौरान देवे से कौन सत्यता थी न पारे तेणु चिठी किंबा डायरी रे जहाँ मिल संभवतः ताहा क्राइम ब्रांच सत्य हो पारे बा क्राइम ब्रांच सत्य मन करि पारे। देखो जो चिठीटे मिली जो चिठी रे तार कन्फेशनल स्टेटमेंट कहवा जे रेकर्ड करिथला निजे निजे सेल्फ रेकर्ड करिथला गोपाल एवं जो चिठीटी को से चिरी की ताकु नष्ट करबा उद्यम करथला पर समय 22 घंटा टुकुरा चिठी मिली चिठीटी A4 साइज रे थिला
बहुत कम जगह तादेर थिला एवं सेतरे जहाँ भी लिखा कथा गोपाल सिंगल पेज लिखि सारी किंतु गोपाल पाखे ऑप्शन रही ता मनर कथा को संपूर्ण भाव उतारिया एवं से जो डायरी एटी मिली दुईटी डायरी मिली से डायरी गुड़िकर निहाती भाव लंबा समय गोपाल जदि योजना करथिला कारण क्राइम ब्रांच एटा परोक्ष स्पष्ट कर सारी एक योजनाबद्ध हत्याकांड जदि नबा दास को हत्या करने की गोपाल योजना करथिला तेबे से योजना केबेटु करथिला योजनार मंजी केबेटु बुणा हैतिला कोन घटना घटितिला जे गोपाल स्वास्थ्य मंत्री को हत्या करिया पई योजनार मंजी बुणीतिला एवं से मंजी केमिति अंकुरितगम होला केमिति से मंजी एक विराट बटग्रुप वृक्ष परिणत होला एवं जहा फल कि से बट वृक्ष संपूर्ण भाबे कबा राज्य को अंधकार मध्य को नै गला तेणु पूरा विश्लेषण से करिथिबो एवं जदि तार मानसिक अवस्था कहबा जे एते खराब भी नथला जहा कुहा जाउची कारण से डायरी लिखिबार तेणु से डायरी रे सविशेष तथ्य लुचिकी रही कथा आम कहीपर किंतु क्राइम ब्रांच एपर्यंत से डायरी बाबद तो कहला किंतु डायरी रे कौन कौन सब रही तथ्य कौन कौन सब उल्लेख रही स्वास्थ्य मंत्री को हत्या करिवार जो रहा सीरीज रहा पूरा जेबेठारु तार कौन मन में आसीथिबा क्रोध आसबा एवं क्रोधरु हत्या पर्यंत जो यात्रा रहा तार मानसिक यात्रा से सबु यात्रा को से लिपिबद्ध करिछि तो एवं जदि लिपिबद्ध करिथिबो एहा गोपाल विरुद्ध गोटे स्ट्रांग एविडेंस हबो एवं जेहेतु हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मध्य स्पॉट रे अछंती सेमान मध्य वेरीफाई कर दे पारिबे जे डायरीटी गोपाल बोली एवं बाकी जदि कहबा हैंडराइटिंग ब्यूरो को गले ता स्पष्ट हो जिवो एवं जेतेबे कोर्ट रे एई सब दस्तावेज दाखल हेबो बा कोर्ट को सम्मुख रे उपस्थापित हबो सेतेबे टिके स्ट्रांग केस बिल्ड हबो या भीतर जदि हम कहबा आज होची तृतीय दिन रिमांडर एवं आसना काली शेष दिन जहां क्राइम ब्रांच उत्तर जणा पड़िछि सीन रिक्रिएशन करि पारे क्राइम ब्रांच एवं एक्जेक्टली जो समय रे घटना घटिला नबा दास को आक्रमण हैला हत्याकांड घटला सेही समय रे ही क्राइम रिक्रिएशन करिया पई चिंता करूछि कि पर्यंत क्राइम ब्रांच पक्षरु स्पष्ट भाबे कुआ जाई नहीं जे क्राइम सीन रिक्रिएशन केबे हबो किंतु जो जगह रे तार ड्यूटी लागितिला सेही जगहटी कौन थी को जगह ड्यूटी लागितिला सेटु से नबा दास को गाड़ी को केते दूर देखा पाइतिला एवं देखिया परे तागर अंटार थिबा बंदूक को केते से बाहर को समय बाहर कला एवं को जगह बाहर कला एक्जेक्टली बाहर कला परे कोठी ताकू कक कला गाड़ी टारू केते दूर रे ताकू कक कला एवं गुली माड़ करिया पर समय स्थिति एवं गुली माड़ पर स्थिति कौन थिला ए सबु बाबद रे क्राइम ब्रांच एक प्रकार प्रश्नर श्रृंखला तैयारी कर सारछि एवं गतकाली केमाकरे आसंता काली एतबेल ताको क्राइम सीन रिक्रिएशन पई गोपाल को निया जिवो बिल्कुल बिल्कुल नभेश आपण जेमति कहउथिले रिमांड रो शेष दिन होउची काली प्रथम पर्यायर एवं बहुत किछि काली मध्य अग्रगति हेबो तदंतर एवं तापरे मध्य नजर रहिबो वास्तव रे क्राइम ब्रांच पुणी थरे रिमांड रे आनिबा पई आवेदन करिवो कि एवं एहारी भितरे डायरी मिलिबा संभवतः अनेक कथा कहि पारे बा अनेक सूचना देई पारे डायरी रे कोन उल्लेख अछि डायरी रे गोपाल सेमिति किछि लिखिचंती कि ता उपरे ही नजर रहिबो लगातार भाबरे हम प्रतिनिधि नभेश महांती ए खबर उपरे नजर रखिचंती एवं सूचना मध्य दउचंती कि डायरी रे कोन अछि वर्तमान सुधा क्राइम ब्रांच पक्षरु स्पष्ट करा जाई नाही किंतु अनुमान करा जाउची जेहेतु गोपाल चिठी लिखिथिले ताकू आधार करी कुहा जाई पारे कि गोपाल निज क्वार्टर्स रे बा निज घरे मध्य जेतेबेले से डायरी रखिचंती डायरी रे किछि ना किछि लिखिथिबे हत्या संपर्क रे कारण संपर्क रे किछि उल्लेख रहिथिबो एवं ताकू आधार करी वर्तमान गुटे ठीक दिगरे बा ठीक रास्ता रे जाई पारे क्राइम ब्रांच एई आशा करा जाई पारे बहुत बहुत धन्यवाद नभेश आपनका समस्त सूचना एवं अपडेट पाई News Flash presented by Safed Detergent Powder. More a choice, more a Safed, more a Safed. मरीगला मानविकता महिला यात्री स्वास्थ्य गुरुतर होबारु रास्तार ओह्लैले बस कर्मचारी बस ओह्लैबार किछि समय पर महिला यात्री मृत्यु होईछि पुअर आखि सामने चलीगला मार जीवन एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथरे गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँव सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हस्पिटाल नेउथिले गाँव को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले हुमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ा और माँ को मेडिकल नेबा को सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लई पड़ाई बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटी बस कर्मचारी एपरी काम को निंदा करिसेंती अंचलवासी
बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाइकोर्ट निर्देश देते। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देते। विवाह बद को नहीं सोमालिका हाइकोर्ट द्वारस्थ होते। हाइकोर्ट निर्देश पर एवं विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी। सोमालिका कहते पावर एक्शन नेउनी पुलिस। जयपुर गस्तर जाए विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ति मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ति। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ति नवीन। 113टी प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ति। 200 कोटी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ति मुख्यमंत्री। एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आगक नेबार सहायक हेब बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी होगा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ति छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ट्रैफिक बाइक को धक्का देबा परे कार घटैछि राश ट्रैफिक। सामना को आसिछि अति विभत्स दृश्य। कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना परे फसी जाइथिला। प्राय 4 किमी News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more safed, more safed. ढेंकानाल महावीरर ओडिशा ग्राम्य बैंक शाखारू बड़ धरणर लुट 5 लाख टंका सहित प्राय कोटिए टंकार सुना अलंकार लुटि नहीं 4 जन दुर्बृत्त। बैंक रे प्राय 500टी सुना अलंकार पैकेट थिबा बैंक पक्षरु सूचना दिया जायछि। दुर्बृत्त माने फांका गुली फुटाई बैंक लुटि नहीं सूचना देइछन्ति मैनेजर अनुराग पट्टनायक। 4 जन दुर्बृत्त 2टी पल्सर गाड़ी रे आसी लुटि नहीं सूचना मिली। अन्यपटे खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। ढेंकानाल महावीरर ओडिशा ग्राम्य बैंक शाखारू होइछि एक बड़ धरणर लुट। प्राय 5 लाख टंका सहित अनेक सुना अलंकार लुटि नहीं 4 जन दुर्बृत्त। बैंक रे प्राय 500टी पैकेट करी सुना अलंकार रखा जाइथिला एवं से समस्त पैकेट को लुटि नहीं दुर्बृत्त माने प्रथमे फांका गुली फुटाई समस्त को भयभीत करथिले एवं तापरे बैंक लुट करथिले। एनै मैनेजर अनुराग पट्टनायक सूचना दैछन्ति। 4 जन दुर्बृत्त 2टी पल्सर गाड़ी रे आसी लुट करथिबा सूचना मिलिछि। अन्यपटे खबर पाई महावीर पुलिस पहुंची तनाघना आरंभ करिछि। केन्दुझर जिला पाटना रेंज रे बाघ आतंक। रोहिणी दुमा गाँव में बाघ आक्रमण में जड़े व्यक्ति मृत्यु होइथिबा अभियोग होइछि। घटना पर उत्तेजित लोके वन विभाग गाड़ी को अटक रखिथिले। बाघर पादचिह्न मिलिथिबा बेले अंचल में बाघ थिबा कथा स्वीकार करिछि वन विभाग। बाघ को ठाब करिबा पई 10टी ट्रैप कैमेरा लगाइछि वन विभाग। या सहित लोकंकु जंगल को जिबा पई बारण करा जाइछि। बाघ आक्रमण रे युवक मृत्यु अभियोग। घटना को नहीं स्थानीय बासिंदा प्रतिवाद सह वन विभाग को अटक। एभली घटना सामना को आसीची केन्दुझर जिला पाटना रेंजर रोहिणी दुमा गाँव। अभियोग अनुसार अनंत जंगल को जाइथिले आउ फेरिबा बाटरे बाघ आक्रमण में तांकर मृत्यु होइथिला। एहा परे लोकंक मध्य उत्तेजना देखा देबा सह क्षतिपूरण दाबी रे धारणा रे बसिथिले लोके। गत किछि दिन धरी एठारे बाघ आतंक लागि रहितबा बेले वन विभाग कोनोसी पदक्षेप नेउनथिबा अभियोग करिसंती। से जंगल तांकर बाघ कामुड़ी देछि कहिले लोक मैंने कहले बड़े आम जाकि बापा को से आनी देहर चिन्ह अच्छी हाथ रांपड़ा गोटे 2-3टा चिन्ह अच्छी। न्याय दिंतु केमती बाघ को हटेबू आम तो भय होगला जंगल ना बर्तमान कुआडे भी जाई पारुन स्कूल भी जाई पारना कहीं भी नहीं से भयटा रही जाउची। वन विभाग किसी बुझीनी खाली इनक्वारी करता काली आसीतिले ताबरे कौन तांको डिसीजन नहीं थिबे कौन। सेपटे जंगल में बाघ थिबा घटना को वन विभाग स्वीकार करिछि। विभिन्न स्थान में बाघर पादचिह्न थिबा देखिबाकू मिलिछि। बाघ को ठाब करने विभिन्न स्थान में 10टी ट्रैप कैमेरा लगा जाउछि। एहा सह लोकों को जंगल को न जिबाकू
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି। କାଲି ଆଜ୍ଞା 9ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ବାଘ ଏଇ ହୁଡ଼ିରେ ଆସିକି ଏଇ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ରୋଡ୍ରୁ ଜମ୍ପ ମାରିକି ବାହାରିଛି ସେପ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କଡା ପତା ବାଘ ଆଜ୍ଞା। ତ କାଲି 5ଟା ବେଳେ ହେଇଛି ଘଟଣା, ତଥାପି ଆକ୍ସନ କିଛି ନେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆଉ यार सुविधा भी किसी करा जाऊ नहीं। 10टा खंडे आम ट्राप कैमेरा से फिक्स करूँ से नियर बाय एरिया रे विदिन 5 किलोमीटर रेडियस रे तापर जना पड़ो आ जो केसटा कहते यहाँ आफ्टर पोस्टमार्टम जहाँ रिपोर्ट आसो गवर्नमेंट जहाँ प्रोविजन अच्छी से अनुसार आम कम करूँ नहीं बर्तमान अच्छी बोली आम कहीपर ना आम ट्राप कैमेरा लगेला प्रेजेंस जानला लोक आम सतर्कता करूँ एवं भी सतर्कता करूँ। बाघ आक्रमण में रोहिणीदुआ गाँव अनंत माझींकर मृत्यु अभियोग होगा पर चेतिची वन विभाग। यही अंचल समुदाय 10टी ट्राप कैमेरा लगाई बाघ को ठाब करने को चेष्टा करुछि। प्रकृत जना पड़ो यही अंचल बाघ रही कि नहीं। केन्दुझर महापात्र न्यूज 18 ओडिया। बजेट पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहित नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी साक्षात्कार जो अर्थमंत्री कहते जे कोरोना काल में आम पाखक जहाँ भी उपदेश आसीथिला ताकू नहीं आमे होमवर्क करूँ अनेक एमिति उपदेश जहाँ को नहीं आमे चिंता कलु जे भल है आमे से सब उपदेश ग्रहण करि नथिलु कारण जदि आमे सही परामर्श ग्रहण करिथांतु ताहार परिणाम भूल होइथांता। I clearly remember that many experts and economists at that time panned the government, panned India, that we were not doing enough for stimulus in the COVID period. And I remember they cited examples of Western economies, European economies, saying that we should at least give 10 to 20% of GDP. That's the bare minimum we should do. Now in hindsight, do you think that it was good to ignore that advice and be tight-fisted, and that is showing up today? Yes, that is why in answering earlier your question, we had to do our homework for every such input which came in at that time. Why? We could have always said, no, this is what appeals to us, and we would have gone ahead. No, but we had to consider every such advice which came in, and also go through the depths of what it would mean, how will it be executed, whether it can really bear the results and so on. Only because whether we choose one way or not, we should know why we have not chosen a particular way and be able to justify saying our understanding was this and that's why we didn't take it. Today I have the advantage of looking back at it and say, good that I didn't take it because the results would have been very different. But the fact remains that we went through every one of the suggestions with equal open-mindedness and rigor. आज राति 10टार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहित नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी सहित संपूर्ण साक्षात्कार देखिपारे न्यूज 18 ओडिया रे। न्यूज फ्लैश प्रेजेंटेड बाय सफेद डिटर्जेंट पाउडर। More choice, more सफेद, more सफेद। मरीगला मानविकता महिला यात्री स्वास्थ्य गुरुतर होबारु रास्तार ओह्लैले बस कर्मचारी बस रु ओह्लैबार किछि समय पर महिला यात्री मृत्यु होईछि। पुअर आखि सामने चलीगला मार जीवन एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथरे। गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँव सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हस्पिटाल नेउथिले। गाँव को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले कुमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ता और माँ को मेडिकल नेबाकू सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी। रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लै पलाइथिले बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटिथिला। बस कर्मचारी एपरि कामकू निंदा करिसेंती अंचलवासी। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ
बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाइकोर्ट निर्देश देते। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देते। विवाह बद को नहीं सोमालिका हाइकोर्ट द्वारस्थ होते। हाइकोर्ट निर्देश पर एवं विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी। सोमालिका कहते पावर रे एक्शन नेउनी पुलिस। जयपुर गस्तर जाई विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ति मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ति। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ति नवीन। 113 प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ति। 200 कोटी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ति मुख्यमंत्री। एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आग को नेबारे सहायक हेब बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी होगा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ति छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ड्राइविंग बाइक को धक्का देवा परे कार घटैछि राश ड्राइविंग। सामना को आसिछि अति विभत्स दृश्य। कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना परे फसी जाइथिला। प्राय 4 किमी बाट कारटी द्रुत बेगरे माड़ी चलिथिला। कार पछरे बाइक ठाकिबा परे सेथुरु बाहरुथला निया झुल परिकणिका। कारटी को पिछा करी बाइक चालक वीडियो शूट करथिले। ए दृश्य देखिले आपनक मनर को आसीजिवो फॉर्मूला 1 कार रेस दृश्य। गुरगांव रो सेक्टर 65 रे घटना घटिछि। पुलिस सूचना अनुसार ए दुर्घटना रे केही आहत होई नांती। केन्दुझर बलानी थाना हाजत मृत्यु घटना रे कार्यानुष्ठान बदलले बड़बिल थाना आईआईसी राजेंद्र स्वाई। राजेंद्र को केन्दुझर जिला पुलिस मुख्यालय को बदली कर सहित आनंदपुर टाउन सदर एवं हरिचंदनपुर आईआईसी को बदली कर गत नवेम्बर 28 तारिख में बलानी थाना न्यूज हेडलाइंस प्रायोजक विमल कुह भाषा केसरी। स्वास्थ्य मंत्री नबा दास को गुलिकांड घटना गोपाल क्वार्टर मिला किसी गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र हाथलेखा कागज और डायरी मिली सूचना। पाइखाना टांकी मिली चिठी से लिखि मानिले गोपाल। चढ़ाऊ बेले बालेश्वर उप जिलापाल एवं ड्राइवर को बाली माफिया आक्रमण। दहपड़ा चेकिंग बेले समय घटना उभय मेडिकल भर्ती। अभियुक्तों को चिन्हट सहित खूब शीघ्र गिरफ कर कहले एसपी। सुना छुईला 60,000 बजेट प्रभाव में उपरमुहा सुना दर 2 दिन में बढ़िला 1600 टंका छुईला सर्वकालीन रेकर्ड। बजेट पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहित नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी साक्षात्कार। कहले कोरोना और यूक्रेन युद्ध समय थिला चैलेंजिंग। घन घन बैठक सहित पूरा स्थितिर मॉनिटरिंग करुथिले प्रधानमंत्री। राज्य में आहुरी 24 घंटा जारी रहिबो शीतलहरी। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा कंधमाल किछि स्थान में खसिबो पारद। रविवार ठू कमिबो शीत प्रकोप। न्यूज हेडलाइंस प्रायोजक विमल कुह भाषा केसरी। आसिबा संपूर्ण खबर को मिलिला गोपालंकर डायरी। गोपालंक क्वार्टर्स आज मिली किसी गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र ता सहित हाथलेखा कागज और डायरी मिलिथिबा कहिछि क्राइम ब्रांच। जबत डायरी को एबे जांच करुछि क्राइम ब्रांच टीम। डायरी रे किसी गुरुत्वपूर्ण सूचना मध्य थाई पारे। सेबटे पाइखाना टांकी मिलिथिबा चिठी ने क्राइम ब्रांच करिछि खुलासा। गोपाल मानिछंती से निजे चिठी लिखिथिले। पाइखाना टांकी 20 रु अधिक कागज टुकुड़ा मिलिथिला। एथिरे नाली रंगरे किछि लेखा जायथिला। आ ई चिठीर सत्यासत्य जानिबा पई हैंडराइटिंग ब्यूरो को मध्य पठाजिबो। तेबे गोपालंकर डायरी मिलिथिबा सूचना रहुछि। गोपालंक क्वार्टर आज गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र मध्य मिलिछि। ता सहित हाथलेखा कागज और डायरी मध्य मिलिथिबा कहिछि क्राइम ब्रांच। जबत डायरी को एबे जांच करुछि क्राइम ब्रांच टीम। तेबे डायरी रे किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना थाई पारे से नै कि क्राइम ब्रांच टीम तनाघना करुछि। सबटे पाइखाना टांकी मिलिथिबा चिठी नै क्राइम ब्रांच करिछि खुलासा।
गोपाल मानिछंती जे से निजे ही एई चिठीटी को लिखिथिले। पायखाना टांकीरू 20 रु अधिक कागज टुकुड़ा मिलिथिला। एथिरे नाली रंगरे किछि लेखा जायथिला। ए चिठीर सत्यासत्य जानिबा पई हैंडराइटिंग ब्यूरो को पठाजिबो। नवदास को गुलीमाड़ा मामला रे ब्रह्मपुर कनेक्शन केतेबेले ब्रह्मपुर होटेल आउ केतेबेले गोपालंकर ब्रह्मपुर घर और परिवार को नहीं चर्चा आउ एबे ब्रह्मपुर रे गोपालंकर बंधु को पचराउचरा करिछि क्राइम ब्रांच। बसस्टाण्ड जाई ड्राइवर को ठारू तथ्य नेछि टीम। सेबडे गोपालंकर ब्रह्मपुर घरे ताला पड़िथिबा बेले जलेश्वरपुर घरर दुआर खोलुनी। नवदास को गुलीमार घटन ब्रह्मपुर और जलेश्वरपुर रे झाड़ बुहाउछि क्राइम ब्रांच। जनक परे जणे एभली प्राय 15 जन को पचरा उचुरा सरिलानी हेले कौन हाथ में लगी से नहीं किछि कहूनी क्राइम ब्रांच। ब्रह्मपुर राजस्व डाक बंगलारे गोपालंक बंधु प्रदीप बेहेरा को पचरा उचुरा करिथिला क्राइम ब्रांच। गोपालंक सह तांको संपर्क केबेठारू तांकर मानसिक अवस्था किभली थिला लोकंक सहित किभली आचार व्यवहार थिला से नहीं प्रश्न करथिले अधिकारी। गोपाल जणे भल खेलाड़ी थिले एवं समस्तंक प्रति तांकर व्यवहार भल थिला। युव बयसरू ही से पुलिस ऑफिसर हेबा पई आशावादी थिले बोली कहिसंती प्रदीप। सेपटे आउ एक टीम सिटी बसस्टाण्ड को जाई सेठारे थिबा पुलिस फांडी रे 4 जन ड्राइवर एवं 2 जन कंडक्टर को पचरा उचुरा करिसंती। ब्रह्मपुर झारसुगुड़ा को केउ सबु औषध जाउथिला गोपाल बस जोगे झारसुगुड़ा जाइछंती कि एभली अनेक प्रश्न पचारिथिला टीम। आउ 2 रु 3 थर गोपाल बस जोगे झारसुगुड़ा जाइथिबा कहिथिले ड्राइवर किंतु गोपालंक औषध विषय कौनसी सूचना नथिबा कहिसंती बस ड्राइवर। से पाठ पढ़िया समय से जन नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन होवार प्रथम उद्देश्य थिला गणमाध्यम चर्चा हो से समय उद्देश्य थिला एवं ता सहित जड़े उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी होवार मध्य तार उद्देश्य थिला। से जड़े हविलदार जगिथिले आगे लई गेले सकाळ पचाले गोपाल दासर कोन पार्सल पत्र केबे मेडिसिन पत्र कोन लई जे आमे आम गाडी केबे पठेथाने आमे मना करदिलो आमे केबे नै पचाले आपण गोपाल महापत्र जो दासंकर कोन पार्सल पत्र तुम गाडी जांच करेगी ताको पार्सल पत्र आम जे मु गाडी चलेबा 4 वर्ष भीतर केबे जाइले ताको नारे केबे पार्सल पत्र आमे नैनो। सेपटे गोपालंक परिवार किंबा तांको भाई सत्यनारायणक परिवार लोके मुह खोलु नाहंती। सेपटे गाँ लोके कहिसंती जे गोपाल गरीबों को साहाय्य करने सहित गाँर उन्नति पाई हाथ बढ़ाउथिले। गोपालंक नहीं गर्व करिथिबा गाँ एबे गोपालंक पाई दुखित बोली कहिसंती लोके। से एमदिके जने लोक बाटरे जने मरी पड़थिले मते से मेडिकल नबा पई बाध्य हेबे से बंचु न बंचु कहि मेडिकल फेरेबा आनिबे से टाइप लोक आमे जा को गर्व बोली भाबुतलु आज सेटा घटी जाई तो ता पे हम गाँ लोक समस्त दुखित है। गोपाल कहीं जड़े मंत्री को गुली कले से नहीं वर्तमान सुधा कारण स्पष्ट होई नथिबा बेले गाँ लोके भी हतबाक। ब्रह्मपुर कैलाश बेहेरा न्यूज 18 ओडिया। बालेश्वर उपजिलापाल एवं ड्राइवर को बाली माफियांकर आक्रमण। सहदेवखुंटा थाना अंतर्गत दहपड़ारे चेकिंग पाई जाइथिया बेले होइछि आक्रमण। ड्राइवर उभय को चिकित्सा पाई मेडिकल में भर्ती करा जाइछि। ड्राइवर गगन प्रधान मुंडरे गुरुतर आघात लागिछि। उपजिलापाल मुंडरे सामान्य आघात लागिछि। जिला प्रशासन पक्षरु आज फुलाड़ी स्थित कंटाबणिया निकट बुढ़ाबलंग नदी रे एक बेआईन बाली खदान चढ़ाऊ करने जाइथिले। तेबे एही समय रे मरणांतक आक्रमणर शिकार होइछन्ति बालेश्वर उपजिलापाल चौहान कुलान मोतीराम। द्विपहर समय रे अबकारी गाड़ी रे आतर्कित अबकारी गाड़ी उपरे अबकारी गाड़ी माध्यम आतर्कित चढ़ाऊ करथिले एवं सही समय रे माफिया माने इटा बेलचा एवं धारुआ अस्त्र रे आक्रमण करबा पई आगे आसीथिले। उभय को बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय आहत हेबा परे चिकित्सा निमंते भर्ती करा जायछि। परे माफिया माने छत्रभंग देइथिबा बेले घटनास्थलरू पुलिस उपजिलापालंकर गाड़ी एवं अबकारी गाड़ी को मध्य उद्धार करिछि।
जाइतिले जहाँ आम प्राइमरी सोर्सेस रो जहाँ जना पड़ुची प्राइमा फेसी बाली माफिया ग्रुपटा जोटा अच्छी सेटा बोधे अटैक करिछि बट एडिशनल इनफॉरमेशन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पर ही जना पड़िबो। सब कलेक्टर निजे जाइतिले किछि सेतेबेले सेठी किछि एक्साइज रा भी टीम थिला एक्साइज एनफोर्समेंट पई तो से टीम भी आम इमिडिएटली मोबिलाइज कलु प्लस पुलिस रा टीम एमिति जाई कि सेठी मशीन ट्रैक्टर्स और बालीरा पाखापाखि 500 ट्रिप्स आम सीज करितिलु और सेटा सब करिकि सेठी रही जो लोकल लोग अछंती तांको ही तार जिम्मा दिया जायतिला। मोर सब कलेक्टर आस्तिले तांकर ड्राइवर भी आस्तिले सब कलेक्टर गोटे कांधरे गोटे छोटिया ब्रुइजटे हेछि बट से तांकर विशेष किसी विपद मुक्त अच्छा से ड्राइवर दुईटी स्टिच पड़ी मुंडे टी आघात होती आंगुली टी आघात होता माइनर आम स्टिच पकईचु ड्रेसिंग करूँ। बजेट पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहित नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी साक्षात्कार जो अर्थमंत्री कहते कोविड हेउ कि रूसिया यूक्रेन युद्ध आमे पाखे एभली समस्या सहित मुकाबिला करबा नै कोनोसी उदाहरण नथिला जहाको अनुकरण करिथांते मते एबे भी मने अछि प्रधानमंत्री किभली आम सहित बैठक करुथले आ से केबे भी थकु नथिले। You were navigating two epochal events in the last couple of years. One was the ongoing pandemic and its impact, and the other was the war in Ukraine. What I would like to understand from you is what was going on in the mind of Nirmala Sitharaman and how she was dealing with policy making in these last 5 historic years. I had no precedent before me to handle such a situation. There were no given templates. There were no examples to follow. And there were no theories which would have worked in such context. So we had to engage in conversation continuously with all people, take their view, wait for ourselves to see which one is all right, which is more suitable for us and which is not. Yes. And also take courage in saying it may not work out for us in one particular way, because eventually somewhere all this has got to be answerable. And therefore I think I would immensely recall the ways in which Honorable PM led the conversation with us. He would never tire himself from meeting us. He would never say not today. So with all necessary precautions taken for COVID, following the protocol, we would still meet and talk about things. But eventually whatever has been at that time decided and put out as schemes, one thing which was not so much relevant for dealing with the pandemic itself but yet had to be done was not to let go the opportunity to continue the reform process. आज राति 10टारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहित नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी सहित संपूर्ण साक्षात्कार आपण देखि पारिबे न्यूज 18 ओडिया रे। अच्छा परवर्ती खबर को आसंता काली ठारू आरंभ हेबो विश्व प्रसिद्ध जोरंदा माघ मेला सेथिपाई जोरसोरे चलीछि प्रस्तुति स्वतंत्र बैरिकेड संघ श्रृंखलित दर्शन पर प्रशासन पक्षरु दिया जाइछि गुरुत्व सबडे 2 वर्षर व्यवधान परे माघ मेला हेउथबारु साधु संतक सहित भक्तंकर हेलाणी आगमन। शनिवार आरंभ हो 147तम विश्व प्रसिद्ध जोरंदा माघ मेला एथिपाई चलचंचल जोरंदा महिमा गादी हाथरे कम समय थिबारु युद्धकालीन भितरे चलीछि प्रस्तुति कामागादी मंदिर बाहर भक्त और साधुसंतों प्रवेश पाई चलीछि स्वतंत्र बैरिकेड निर्माण भिड़ कमाइबा पाई गादी मंदिर अन्य 3 द्वार दे भक्तों प्रस्थान करा जियो बोली मध्य स्थिर करा जायछि। 2 वर्ष पर पूर्णांग माघमेला लक्षाधिक साधु और भक्तों समागम होगा आशा रही। कोरोना कटना जो माघमेला बंद होता जहाँ प्रभु आशीर्वाद वर्ष आमर शांति समाधान सहित माघमेला होगा जाऊँगी आउ समस्त बर्तमान प्रस्तुति सब कम चली दुकानी बापा मैंने आसी स्टेज सब सजेले परंपरा हिसाब से जमी रीतिनीति हिसाब से सब चली बाबा मैंने सब जो अंचल थे बाबा सब विराजमान हेले
आमर सब जति सब कार्य हवा कथा जमी आम प्रशासन हिसाब से सब कार्य हवा कथा है सेठू आम छाली छाली कर आसीचु बाबा सहित प्रभु आशीर्वाद आम ये नीति कटबू नीति कटिकी बाबा मान आमको नीति रे भिक्षा जगाइबा लागबो। माघ मेला जिला तथा जिला बाहर अनेक उठा दुकानी संभार लगिब सेथिपाई पड़ियारे व्यवसायीଙ୍କ ପାଇଁ व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। गादी परिसर रे थिबा ज्योति मंदिर और गादी मंदिर रे महण महण घिओरे संध्यारे जलिब झाड़ दीप। विश्व कल्याण उद्देश्य रे एही घृताहुति प्रदान कराजिब। अलेख महिमा ध्वनि प्रकम्पित हेब महिमा धर्मर उत्पत्ति स्थल जोरंदा महिमा गादी। आमर तो महिमा धर्मर विश्व रे प्राय अनेक जगह भारत वर्ष अच्छा विशेषकर बेंगल बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ आमर बाहर देश कहले नेपाल आमर आंध्र प्रदेश आशा समेत सब गुड़ाक अंतर्भुक्त अच्छा महिमा धर्म समस्ते निश्चिंत आस आशा करा बहुत जनसंख्या समागम हम ताको आख्या रखिकी आम प्रस्तुत अच्छु एवं किभଳି भाव सुंदर भाव सुचारूपे करूँ किभଳି भाव आम जोटा कि महिमा धर्मर अच्छी ख्याति केवल आम जिला नुह राज्य नुह राज्य बाहर को जीव मोटामोटी भावुचे निश्चित भाव में भल भाव पालन करूँ। 2 वर्षर व्यवधान पर जाक जमक ढेंकानाल जोरंदा महिमा गादी में पालित होब 147तम माघ मेला आथिपाई चूड़ांत पर्यायर पहुंची प्रस्तुति महण महण घीओरे विश्व कल्याण उद्देश्य जगत भगतर मंगल घृताहुति प्रदान करा सहित अलेख महिमा ध्वनि रे प्रकम्पित होब जोरंदा महिमा गादी। ढेंकानाल आशीष रंजन शतपथी न्यूज 18 ओडिया। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. मरीगला मानविकता महिला यात्री स्वास्थ्य गुरुतर होबारु रास्तार ओह्लैले बस कर्मचारी बस ओह्लैबार किछि समय पर महिला यात्री मृत्यु होईछि। पुअर आखि सामने चलीगला मार जीवन एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथरे गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँव सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हस्पिटाल नेउथिले। गाँव को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले उमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ा और माँ को मेडिकल नेबाकू सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी। रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लई पड़ाई बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटी। बस कर्मचारी एपरी काम को निंदा करिसेंती अंचलवासी। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाइकोर्ट निर्देश देते। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देते। विवाह बद को नहीं सोमालिका हाइकोर्ट द्वारस्थ होते हाइकोर्ट निर्देश पर एवं विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी। सोमालिका कहते पावर एक्शन नेउनी पुलिस। जयपुर गस्तर जाए विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ति मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ति। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ति नवीन 113 प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ति। 200 कोटी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ति मुख्यमंत्री। एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आगक नेबार सहायक हेब बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी होगा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देइथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ति छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ड्राइविंग बाइक को धक्का देबा परे कार घटैछि राश ड्राइविंग। सामना को आसीछि अति विभत्स दृश्य कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना परे फसी जाइथिला। प्राय 4 किमी बाट कारटी द्रुत बेगरे माड़ी चलिथिला। कार पछरे बाइक ठाकिबा परे सेथुरु बाहरुथला। News Flash presented by Safed Detergent Powder.
मोर चॉइस मोर सफेद। अनुगुल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं गाँ गाँव में असंतोषर वातावरण देखा मिलूँ। केउठी पंचायत कार्यालय में ताला पड़ुछि तो आउ केउठी ब्लॉक कार्यालय आगे विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछि। जिले में प्रथम पर्यायर 9644 और द्वितीय पर्यायर 6125 जन हिताधिकारी को विभिन्न कारणों अयोग्य घोषणा करा जाई तालिकारु बाद दिया जाइछि आउ जहाकु नहीं देखा देइछि असंतोष। प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं अनुगुल जिले में असंतोष। योग्य बदल में अयोग्य हिताधिकारी को मिलुछि घर। बारंबार आवेदन सत्वे बाद पड़ुछंती योग्य हिताधिकारी। 2021-22 आर्थिक वर्ष पई अनुगुल जिला को 18,422 प्रधानमंत्री आवास जोगाई दिया जायथिला। तेबे एथिरे योग्य बदल में अयोग्य हिताधिकारी को आवास दिया जायथिबा अभियोग होइतिला। एहापरे सरकार प्रत्येक पंचायत ब्लॉक तथा जिला कार्यालय समेत ऑनलाइन रे अभियोग मागिथिले। प्रथम पर्यायर 34,671 जन हिताधिकारी आवेदन करथिबा बेले 9,466 जन को अयोग्य घोषणा करा जायछि। सेहिपरि द्वितीय पर्यायर 6,125 जन को अयोग्य घोषणा करा जायछि। वर्तमान जिल्ला रे मोट 18,038 जन को योग्य विवेचित करा जाई विभिन्न पंचायत और ब्लॉक कार्यालय रे सेमानक नाम तालिका लगा जायछि। किंतु अनुसंधान बेले पातर अंतर नीति अवलंबन करा जायथिबा अभियोग होईछि। पंचायत स्तर रे जे 3 जणिया कमिटी को जांच दायित्व दिया जायछि सेही कमिटी मध्य सठिक भाबे काम करू नथिबा अभियोग होईछि। 5 थर करि जे अप्लाई आइगिन फोटो उठाई जिति 5 थर नै जिति फोटो उठाइगिनी रेजरेस करिगिनी देइछि 4-5 थर कहीं शुणी ना ना मोर आईला काटी जीति हम जानी आम घर पर 2-3 थर कलुना अप्लाई से माने किछि करि दउनती हैला तापरे एथर हमर 4-5 थर हैलाने जते सब नेखाई राशन कार्ड ए जो मोडा कोन आधार कार्ड जेरक्स 3-4 थर देलुने काई किछि माने आपण माने करि दउतु। सेपटे कौनसी परिस्थिति रे मध्य अयोग्य व्यक्ति को आवास दिया जीव नाही बोली जिला प्रशासन तरफ कह जायछि। समस्त अभियोगर जांच करा जायछि। जेउठी किछि त्रुटि देखा देछि तालिकारु बाद दिया जायछि बोली कार्यनिर्वाही अधिकारी कहिसंती। बहुत थर इंदिरा आवास पई भी डॉक्यूमेंट देलुनु हेले कोनोसी थर घर आसुनी किए काटुजी कोन करूजी सारा हमकी जणा नाही हेले इमदी घरे आमे रही जो इमदी खुकुरी कुड़िया रे आउ गोटी गोटी करी एनक्वायरी करा जायथिला फील्ड की जायके एनक्वायरी करा जायथिला एवं सेथिरु मध्ये आमर 1051 जन को मध्ये योग्य बाहर से एनक्वायरी मध्यरु किछि योग्य बाहरले एतिक अयोग्य बाहरले वर्तमान हम पाखरे 18,029 टी माने लोक अछंती जो माने कि योग्य हम पाखरे। जदिओ अभियोग ग्रहण अवधि शेष हो जाइछि आवास पूर्णांग तालिका प्रकाश पाइछि तथापि आवास कली थमुनी गाँ गाँ रे पंचायत रे एहाकु नै चलीछि आलोचना और पर्यालोचना। अनुगुलुर भिकारी महांती न्यूज 18 ओडिया। बाहागर हेउ कि किछि अन्य सेलिब्रेशन सुना तो निहाती जरूरी हेले मार्केट रे एबे आकाश छुआ सुना दर दिनकु दिन वृद्धि पाउछि सुना दर। सुना उपरे आमदानी शुल्क वृद्धि लागि बजेट रे सरकार को घोषणा परे एहार प्रभाव बाजार रे देखिबाक मिलछि। सुना दर बढ़ी सर्वकालीन रेकर्ड स्तर रे पहुंचिछि। सुना दर 60,000 छुईथिबा बेले आगकु एहा 65,000 छुई पारे बोली व्यवसायी कहउछंती आ जहाकु नै चिंता रे ग्राहक। बजेट परे सुना बाजार रे निया रेट सुनी ग्राहक छानिया। गत 3 दिन रे सुना 1600 टंका वृद्धि पाइछि। एपरिकी प्रथम थर 10 ग्राम सुनार मूल्य 60,000 टंका पार करिछि जहाकी सुनार वर्तमान सुधा सर्वकालीन रेकर्ड। शुक्रवार राजधानी रे 10 ग्राम 24 कैरेट सुनार मूल्य 60,700 टंका रहिथिला। 3 दिन पूर्वरु जहार मूल्य रहिथिला 58,900 टंका। सेहिभଳି 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 52,600 रु बढ़ी 54,600 होइछि जहाकु नै चिंतारे ग्राहक। जेउ भली स्थिति हेलानी सुना किनिबाकू डरिलेनी लोके सबुठु अधिक प्रभावित हेउछंती मध्यवित्त श्रेणी। आम ओडिया घर फैमिली रे जेमती बाहागर हो एमती साधारण भाव रे भी आम माने आम लेडीज माने बहुत भल पाती सुना सबू अलंकार जेमती जानिथिबे सबू
तो जमती दिन को दिन एत बढ़ी जाऊँगी लोक मैंने डरी जाऊँच धनी लोक मानी मे भी किसी एत आफेक्ट करूँ किंतु पूरा गरीब लोक बा मध्यवित्त माने से माने जदि चाहूथे आम एत किणापी से ऑब्वियसली बहुत कमी जाऊँगी और से किणला बेल को बहुत भाईवा पड़ुची जहाँ भी जमती मुझे किणिली मसे तले मोर बहुत किसी प्लान थिला किंतु रेटा देखिकी मोर भी कमीगला। सुना व्यवसायी कहवा कथा सुना रूपा और प्लाटिनम गहना उपरे आमदानी शुल्क 22% रु 25% को वृद्धि करने लगी चलित बजेट रे घोषणा करिसेंती केंद्र अर्थमंत्री। तेणु आगकू अर्थात एप्रिल पहिला रु दाम आहुरी वृद्धि पाइब। बजेट परठारु सुना उपर मुहा हेबा आरंभ होईछि। 2023 एप्रिल पूर्व सुना दर वृद्धि पाई 65,000 छुई पारे बोली आकलन करिसेंती सुना व्यवसायी। बजेटा डिक्लेयर है बजेट रे गोल्ड रो ड्यूटी ऊपर किसी इफेक्ट पड़नी सेटा नो डाउट गुड भलो किंतु इंटरनेशनल मार्केट रे हमर जो गैपटा इंडिया मार्केट को नेशनल मार्केट जो 1.8% गैप रोला ड्यूटी जिते किसी चेंजेस हेलानी बर्तमान प्राइसटा इंटरनेशनल मार्केट को मैच करिवो जो द्वारा कि रेट हाइक हेबार चांसेस 90% अच्छे निश्चय निश्चय बढ़ियो कहीं माने जो डिफरेंस 1.8 नॉट ए स्मॉल अमाउंट बहुत बड़ अमाउंट है से ठीक रिच कला बेले रेटा निश्चय बढ़ियो माने होप करूछु। चली विवाह ऋतु हेले सुना दर आकाश छुआ एभली स्थिति रे प्रभावित हेउछि व्यवसाय। साधारण लोकंक समेत व्यवसायींकर मध्य चिंता बढ़ाई देछि सुना। भुवनेश्वर कैमरामैन संजय साहूंक सह निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया। मार्चरू आरंभ हो बहु प्रतीक्षित पेटानाल पुनरुद्धार काम एसत कटक सीडीए बिड़ानासी बासींकर दीर्घ दिनर दुख दूर हो 36 कोटी टंका व्यय पंक उद्धार सहित सौंदर्यकरण काम हो 1.5 वर्ष मध्य काम शेष होगाकू लक्ष्य धार्य करा जायछि। दीर्घ वर्ष प्रतीक्षार हेब अंत मार्चरू आरंभ हो सीडीए पेटानाल काम पुनरुद्धार सह हेब सौंदर्यकरण काम नालर उभय पटरे रहिब पार्क एथिसह उज्जवल आलोकीकरण मध्य कराजिब। एथिपाई 36 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। सीडीए सेक्टर 10 रु अश्विनी हॉस्पिटल पर्यंत लंबिथिबा नालर पुनरुद्धार काम मार्च मास 1 तारिख रु आरंभ हेब। पुतिगंधमय परिवेश सह सीडीए बिड़ानासी अंचल वर्ज्य जल पेटानाल छड़ा जाउथबारु मशामाछीक दौरात्म्य अतिष्ठ स्थानीय लोके वर्तमान पेटानाल पुनरुद्धार प्रस्तुति शेष होता बेले 1.5 वर्ष भितर संपूर्ण काम सरियो बोली कहिसेंती सीएमसी मेयर। 36 कोटी टंकार आमको 5 वर्ष लगे फाइनाल अप्रुवाल सरी मार्च 1 तारिख काम आरंभ हम एटा वर्ष रु 1.5 वर्ष भीतर काम सर एटा साइटा भी सौंदर्यीकरण होची नुआ रूपरेखा अग्रगति कर पेटानाल देखला भाया जगह हो। राज्य सरकार को आम बहुत अनुरोध करी बहुत दिन धरी प्रपोजाल पेंडिंग था तो फाइनाल करके टेंडर फेंडर कंप्लीट करके काम आरंभ कर मार्च मास जाऊँ। सीडीए बिड़ानासी अंचलवासी पेटानाल अनेक गुरुत्व बहन करुवा बेले एहार पुनरुद्धार कार्य आरंभ नहीं दीर्घ वर्ष अतिक्रम कलानी। एथिपाई अनेक प्रतिवाद मध्य देखिबाकु मिलिछि। पूर्वरु पेटानालर पंक भितर पशि प्रतिवाद भी करथिले विधायक मुकिम। एपरिक हाईकोर्ट रे भी एने मामला होइछि। एबे प्रकल्प काम खूब शीघ्र आरंभ कराजियो बोली कहिसंती कमिशनर। प्रथम पर्यायर वार्डको पक्षरु पेटानाल को छड़ाउथुवा नर्दमा पानी और वर्ज्य जल को बंद करा जायछि। एहाकु सीधासलख वाटर ट्रिटमेंट प्लांट को छड़ाजिब परे एठारु पंक उद्धार करा जाई तार सौंदर्यकरण कार्य कराजिब। एहासह नाल उपरे 4 रु 5टी छोट छोट पोल निर्माण कराजिब। शीघ्र काम आरंभ होई सरिबो बोली आशा रखिछंती लोके। दीर्घ वर्ष है कौन कार्यक्रम होना निश्चय यहाँ हूँ जो मशा माछी आलिया देखी पारे जो अलिया होकर पड़ी बर्तमान तो हेले देखिए एत मशा जे लोक रही भी ये हो पारनी ये सीटे सब चाहिए अपरिष्कार हो पड़ी पेटानाल जोगुरु निश्चय जो पचास शीघ्र काम हवा दरकार। वार्ड को तरफ से जी आम सुवरेज लाइन आसूला पेटानाल भितर से सब क्लोज कर अलरेडी एंड जी आपणकर लाइनिंग है बेले पेटानाल उपर जो 4-5टा जो ब्रिजेस अच्छी से सबू भी आमको नुआ करने को पड़ो। सो 3 एस्पेक्ट्स रहिबा ब्रिजेस एक्चुअल नालार बैंकिंग काम एंड आम सीएमसी तरफ जो ब्यूटिफिकेशन माने ब्रिजेस टिके टाइम लगी पारे बिकॉज काम हल्ला पर ही हमें ब्रिज करूँ बाकी 2टा काम हमें यही मास स्टार्ट करते। अनेक बाद प्रतिवाद पर पेटानालर उन्नतीकरण कार्य आरंभ होगाकू जाउछि। एबे अपेक्षा केबे सरिबो कार्य आउ केबे दूर हेबो सीडीए बासींक दुख। कटक दिव्येन्दु मिश्र न्यूज 18 ओडिया। News Flash presented by Safed Detergent Powder.
मोर चॉइस मोर सफेद मरीगला मानविकता महिला यात्री स्वास्थ्य गुरुतर हेबारु रास्तार ओह्लैले बस कर्मचारी बस ओह्लैबार किछि समय पर महिला यात्री मृत्यु होईछि। पुअर आखि सामने चलीगला मार जीवन। एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथरे। गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँव सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हस्पिटाल नेउथिले। गाँव को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले हुमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ा और माँ को मेडिकल नेबाकू सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी। रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लै पलाइथिले बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटिथिला। बस कर्मचारी एपरि काम को निंदा करिसेंती अंचलवासी। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाइकोर्ट निर्देश देइछंती। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देइछंती। विवाह विवाद को नहीं सोमालिका हाइकोर्ट द्वारस्थ होइथिले। हाइकोर्ट निर्देश पर एबे विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी। सोमालिका कहते पावर रे थिबारु एक्शन नेउनी पुलिस। जयपुर गस्तर जाए विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ती मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ती। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ती नवीन। 113 प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ती। 200 कोटी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ती मुख्यमंत्री। एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आग को नेबारे सहायक हेबो बोली मुख्यमंत्री कहछन्ती। मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी हेबा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देइथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ती छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ड्राइविंग बाइक को धक्का देबा परे कार घटैछि राश ड्राइविंग। सामना को आसिछि अति विभत्स दृश्य। कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना पर फसी जाइथिला। प्राय 4 किमी बाट कारटी द्रुत बेगरे माड़ी चलिथिला। कार पछरे बाइक ठाकिबा परे सेथुरु बाहरुथला निया झुल परिकणिका। कारटी को पीछा करी बाइक चालक वीडियो शूट करथिले। ए दृश्य देखिले आपनक मनर को आसीजिवो फॉर्मूला 1 कार रेस दृश्य। गुरगांव रो सेक्टर नमस्कार। दिन जेतिकी गड़ुछि मंत्री नब दास हत्या रहस्य सेतिकी विचलित करुछि। तथ्य प्रमाण जोगाड़ करिबारे लागिछि क्राइम ब्रांच। पाइखाना टांकीरू कागज टुकुड़ा मिलिबा परे एही मर्डर मिस्ट्री एक नुआ मोड़ देई गति करिछि। आ याहारी भितरे गोपाल दास को डेमो देखाइबा, घटनास्थल रे क्राइम ब्रांच रो छानबीन करिबा आदि घटना को नुआ दिशा देइछि। सेबडे गोपाल दास को हत्या पछर मिस्ट्री भितरे लुचि रहिछि अनेक मिस्ट्री। सतरे जड़े कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर भितरे लुचि रहिथिला एमिति एक नृशंस अपराधी। तांको डेस्टिनी बा भाग्य रे कोन सैया लेखा थिला। स्वाभाविक मानसिकता भितरे लुचि रहिथिला एक किलर कप। चलंतु आरंभ करिबा एहाकु नै आजर स्पेशल रिपोर्ट। किलर कप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ए सबु ना सुनिले छाती रे छनका पसी जाए। सर्वसम्मुखरे मंत्री नब दास को हत्या करिथिबा अभियुक्त गोपाल दास को कॉन्फिडेंशियल किलिंग तांको किलर कप रो आख्या देछि। पुलिस क्षेत्र रे एही टर्म अलगा, किंतु ज्योतिर्विद गोपाल दास को फेस रीडिंग करिबा परे कहिसंती अनेक रोचक कथा। भारतीय पुलिस इतिहास रे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भावे जनाशुना अनेक पुलिस ऑफिसर को फेस रीडिंग गोपाल दास को फेस रीडिंग सह प्राय समान। आसंतु देखिबा। सेमाने भूली जानती मानविकता, नृशंसर चरम सीमा, मनीषख्या ऑफिसर, किलर कप। राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्री
नब दासଙ୍କ हत्याକୁ 6 दिन बीतीगला प्रमाण जोगाड़ करने झाड़ बुहाउछि क्राइम ब्रांच। यारी भितरे अभियुक्त गोपाल दासଙ୍କୁ नहीं जोर धरी चर्चा। से केमिति स्वभावर थिले, तांको हावभाव केमिति थिला, कारण तांको लाइफ हिस्ट्री देखिले लागे जे से जने कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी थिले। किंतु एमिति कौन हैला जे से एकाथरे नृशंस पालटि गले? मानसिक अवस्था भल नथिले कोन मनीष नृशंस पालटि जाए? तांकर मुह देखि कोन यहा जना पड़िबो? शुणंतु ए विषय कौन कहउछन्ते ज्योतिर्विद कैप्टेन मानस स्वाई। हाँ आप देखो यही भाया आहरी किसी लोक भी पुलिस डिपार्टमेंट थिले ऑफिस रे तांकर ना सब से बॉम्बे सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहती सचिन भाजे हुंतु सालास्कर हुंतु से माने सबकर फेस रीडिंग देखिए प्राय गोटे टाइप समान से माने अवश्य टेररिस्ट मान को मारचंती बा गुंडा मान को मारचंती बा माफिया मान को मारचंती ये जड़े मंत्री को मारचंती गोटे उच्च गोटे बड़ प्रतिष्ठित व्यक्ति को मारचंती। तो ये माने बेसी कथि है माने मानसिक दुश्चिंता जेहेतु बहुत थाए यही भाया लोक मान विशेषकर आम्बिशन हेले मानसिक दुश्चिंता आसो जदि लोक साटिस्फाइड होकर से आउ नेक्स्ट चिंता गुड़ा बेसी करबनी से जेहेतु अनसाटिस्फाइड लाइफ रे तो आम्बिशियसटा बढ़ी जाइए ताको साटिस्फाई करबे स्कोप मध्ये मिलिला नहीं तो से सेमती कामटे करि बसी। तबे गोपाल दासଙ୍କ व्यतीत पुलिस इतिहास रे आहुरी अनेक नाम अछि जो मानको किलर कप कुहा जाए। एमिति केतेक पुलिस अधिकारी विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। विजय साल्सकर थिले मुंबई रो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। से तांको कार्यकाल भितरे 75 रु 80 एनकाउंटर करथिले। अधिकांश एनकाउंटर से अरुण कवाली गैंग रो सदस्य को करथिले। 2008 मुंबई विस्फोरण समय रे से आतंकवादी द्वारा आक्रमण शिकार हुई शहीद होइथिले। तेबे तांको मुहर रहस्य गोपाल दासଙ୍କ मुहर रहस्य समान। गोपाल दास जे स्वभावर व्यक्ति विजय साल्सकर मध्य सही स्वभावर थिले। तांकर फेस रीडिंग और गोपाल दासଙ୍କ फेस रीडिंग प्रायतः समान। सचिन बाजे मुंबई पुलिस रो सब इंस्पेक्टर थिले। सचिन बाजे जने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भाबे से जनाशुना। से प्राय 63 एनकाउंटर करिसंती। 2021 आंटिलिया बोमा स्क्वायर केस रे से बे एनआईए हेफाजत रे अछंती। तांको फेस रीडिंग मध्य गोपाल दासଙ୍କ सह प्राय समान। दया नायक होचंती मुंबई पुलिस रो असिस्टेंट इंस्पेक्टर। 90 दशक रे से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भाबे जनाशुना थिले। डिटेक्शन यूनिट सदस्य भाबे से 80 रु अधिक गैंगस्टर को एनकाउंटर करिसंती। 2006 मसीह रे से क्रिमिनल लिंक वाय बहिर्भूत संपत्ति मामला रे सस्पेंड होइतिले। तांकर फेस रीडिंग मध्य मंत्री नब दासଙ୍କ हत्या मामलार अभियुक्त गोपाल दासଙ୍କ सह प्राय समान। प्रदीप शर्मा मुंबई एनकाउंटर स्क्वाड जने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भाबे से जनाशुना। 312 रु अधिक अपराधी को से एनकाउंटर करिसंती। 2008 रे दुर्नीति मामला रे से सस्पेंड हेबा परे 2017 रे पुनः चाकरी को फेरिथिले। एहा परे 2019 रे चाकरी इस्तीफा देई से शिवसेना रे जोग देइथिले। नालसोपरा विधानसभा आसन रो शिवसेना टिकेट रे निर्वाचन लड़ी से हारिथिले। तेबे तांकर फेस रीडिंग मध्य गोपाल दासଙ୍କ भଳି प्राय समान। एमिति आहुरी अनेक पुलिस ऑफिसर अछन्ते जो मानक फेस रीडिंग रो जना पड़े जे एमाने केते नृशंस। जो पुलिस ऑफिसर मानक विषय रे आमे आपणको कहिलो से माने अपराधी को एनकाउंटर करिसन्ते। किंतु गोपाल दास ओडिशा सरकार को मोस्ट पावरफुल मंत्री नब दास को हत्या करिसन्ते। ए मामला रे एबे से अभियुक्त ज्योतिर्विद कहवा अनुसार जो व्यक्ति आम्बिशियस थांती से मानसिक दुश्चिंता दे गति करुथांती। जो पुलिस ऑफिसर माने एनकाउंटर करिसन्ते समस्त फेस रीडिंग प्राय समान। आउ थरे सुनंतो कौन कहिसन्ते ज्योतिर्विद कैप्टेन स्वाई। हाँ आप देखो यही भाया
आहरी किसी लोक भी पुलिस डिपार्टमेंट थिले भितर ना सब से बॉम्बे सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहती सचिन भाजे हूँ सालास्कर हूँ से सब फेस रीडिंग देखिए प्राय गोटे टाइप सामान से अवश्य टेररिस्ट मान को मार्चंती गुंडा मान को मार्चंती माफिया मान को मार्चंती ये जड़े मंत्री को मार्चंती गोटे उच्च गोटे बड़ प्रतिष्ठित व्यक्ति को मार्चंती तो ये माने बेसी कथी है माने मानसिक दुश्चिंता जेहेतु बहुत थाए ये लोक मान विशेषकर आम्बिशन हेले मानसिक दुश्चिंता आसो जदि लोक साटिस्फाइड होकर से आउ नेक्स्ट चिंता गुटा बेसी करबनी से जेहेतु अनसाटिस्फाइड लाइफ रे तो आम्बिशियसटा बढ़ी जाइछि ताको साटिस्फाई करबे पे स्कोप पदे मिलिला नै तो से सेमती कामटा करि बसी। अभियुक्त गोपाल दास को विभिन्न दिगरु पचराउचरा करुछि क्राइम ब्रांच से निजे हत्या करिथिबा मध्य कुहा जाउछि किंतु हत्यार कारण विषय रे एबे तथ्य प्रमाण गोटेबार लागिछि क्राइम ब्रांच केबे एही हत्या मामलार परदा हटिबो ताको ही अपेक्षा करिछन्ति राज्यवासी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। काहींकी गोपाल दास चिठी लिखिथिले क्राइम ब्रांच एयरपोर्ट थानारू जो कागज टुकुड़ा पाइछि ताहा अनेक रहस्य सृष्टि करुछि। तमाम प्रश्न घेर एही कागज टुकुड़ा घटनार एते दिन भितरे पाइखाना टांकी रे कागज थिला केमिति गोपाल दास को काहींकी पुलिस जांच करि नथिला। आउ एक बड़ अघटन जदि गोपाल दास घटाई थांता सेथि पई किए दायी होई थांता एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर पाइबा किंतु एते सहज नुहे। काहींकी चिठी लिखिथिले गोपाल दास हत्या पर निज पाखरे केमिति कागज रखिथिले गोपाल केमिति जानी पारलेनी स्थानीय पुलिस गोपाल को चिठी को नहीं बढ़ुची सस्पेंस। क्राइम ब्रांच मिडनाइट ऑपरेशन ड्रामा देखिला सारा ओडिशा। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट थाना परिसर में थिबा पानी टांकी शेष क्राइम ब्रांच को कागज टुकुड़ा मिला। यह नहीं अरुण बोथरा एंड को टिके आश्वस्त भी हेले तेणे गांधी छक फांडी रे जबत होतिबा कार भितर पाइखाना टांकी भली कागज मिली। तेबे तमाम विषय कौन प्रमाणित करने को चाहूँगी मिडनाइट ऑपरेशन करी पाइथिबा कागज टुकुड़ार तथ्य खोजिबार लागिछि क्राइम ब्रांच किंतु ए कागज टुकुड़ा एबे स्थानीय पुलिस को संदेह घेर को नहीं। पाइखाना टांकी मिलता कागज टुकुड़ा को नहीं एबे घंटा चकटा। गतकाली झरसुगुड़ा विमान बंदर थाना पाइखाना टांकी बाहर कागज टुकुड़ा को नहीं तदंतकारी दल रखिछि अनेक आशा। एथुरु नवदास मर्डर मिस्ट्री को खोलिबा लागि तथ्य प्रमाण बाहर करबा को आशा रखिछि क्राइम ब्रांच। सेथिलागि पहुंचुछन्ति साइंटिफिक टीम हाथ लेखा जांचकारी दल किंतु ए टुकुड़ा को नहीं उठिछि अनेक प्रश्न। कह कागज टुकुड़ा होछि गोपालंकर हाथ लेखा चिठीर जोंथरे से नवदास को काईके मारिथिले ताहा लिखिछन्ति। जदि ए कथा को विश्वास करा जाए एबे प्रश्न उठुछि कौन अपराधी को धरवा बेले ताकू संपूर्ण खानतलाश करा जाए। गोपाल को संपूर्ण जांच करा जाय नथिला कि जदि तांको पाखरे थिबा अन्य समस्त जिनिस जब्त करागला चिठी को छाड़ी दिया गला काहेकि जदि से समस्त हत्यार कारण संपर्क रे चिठी द्वारा जणाइबा को चाहुतले तबे एहा को पाइखाना टांकी रे नष्ट करिवे काहेकि से चिठी रे प्रकृत रे कोन लिखिथिला गोपाल जहा तांको वर्तमान ठारो आ अधिक असुविधा रे पकाई थांता। हजार हजार लोकों को आखि आगरे जने मंत्री को हत्या करबा परे से समस्त को ठारो आ कोन लुचाइबा को चाहुछंती। ए सब प्रश्न एवं समस्त मन में सृष्टि करिछि अनेक द्वंद्व अनेक संदेह। ए सब भितर आउ एक दिग संदेह सृष्टि करिछि अभियुक्त गोपाल दास कहीं चिठी लिखिथिले एवं कहीं से यह चिरी देले। पुलिस सूत्रରୁ मिलिथिबा खबर अनुसार जदि गोपाल को एनकाउंटर करा जाय थांता किबा तांको संगरे मॉब लिंचिंग होई थांता तबे दुनिया तांकर उद्देश्य विषय रे जानि पारि थांता। तबे से कहीं चिठी चिरी देले कह जाउछि से जीवंत धरा पड़ी जिबा परे आ चिठी को निज पाखरे रखिबा को चाहिले नाही कारण एबे चिठी ही तांको विरोध रे सबुठु बड़ प्रमाण भाबे उभा होई थांता। आ एबे से निज को बंचाइबा को क्राइम ब्रांच सह जो द्वंद्व युद्ध करूछंती सेथिरे विफल होई जाय थांते। एबे से निज को बंचाइबा को अनेक प्रकार प्रयास करिवे।
अन्यपटे अभियुक्त गोपाल दासଙ୍କର ହେବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ। ଜବତ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ? ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଚିଠିକୁ କେମିତି ପୋଡ଼ାଯିବ? ସଂଗୃହୀତ ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜରୁ ଯେମିତି ରିକଭରି ହେବ ଅକ୍ଷର, ଲିଭି ଯାଇଥିବା କାଗଜରୁ ଅକ୍ଷର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଚିଠିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକାଠି କରାଯିବ, ଚିରା ଚିଠିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଯିବ। ଯଦି ଅକ୍ଷର ଲିଭି ଯାଇଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଭିଡିଓ ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲାର କମ୍ପାରେଟର ମେସିନ ଜରିଆରେ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ରିକଭରି କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଅଛି VSC 6000। କେଉଁ ପେନ୍ରେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ବଲ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ରିକଭରି ସହଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଇଙ୍କ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରେ ବା ନ ମିଳି ବି ପାରେ। ସେପରି କେଉଁ କାଗଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା କାଗଜର କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଭିଜିବିଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଯଦି କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ରିକଭରି ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଯିବ। ତାହା ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ର କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିଟ୍ରେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିଟ୍ର ତାକୁ ତାର ଏଜ୍ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ପ୍ରଥମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ପେପର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପେପରର କି ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାପରେ ସେ ପେପରରେ ଥିବା ଯେଉଁ କାଳି ଯେଉଁ ଲିଭି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ପାର୍ସିଆଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମର ଉନ୍ନତ ମାନର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଭିଡିଓ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ କମ୍ପାରେଟର ଅଛି, ସେଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି। ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଇଙ୍କ ଥିବ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଇଥିବ ତେବେ ତାହା ବାହାର କରି ତାର ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ବଡ଼ ଫର୍ମରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋର କରି ତାକୁ ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଲେଖା କିଏ ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇ ଲୋକର ଯାହାକୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ ସେ ଲୋକର ଲେଖା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରି ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ କହିହେବ। ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କ୍ରାଇମ ସ୍ପଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଫାଣ୍ଡି, ଗୋପାଳଙ୍କ ଘର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ତର୍ଜମା କରି ପ୍ରମାଣ ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିବା ଗୋପାଳ ମୁହଁରୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଅରୁଣ ଆଣ୍ଡକୋ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News 18 Odia। ମରିଗଲା ମାନବିକତା। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଅର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା ମାର ଜୀବନ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ସହରର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମତୋଳା ଗାଁର ସୁଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜର ମା ରୁନୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଥିଲେ। ଗାଁକୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଫେରିବା ବେଳେ କୁମା ଗଞ୍ଜାମ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରୁନୁଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମାଆକୁ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ସୁଜିତ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲେ ବି ଶୁଣି ନଥିଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶନି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଳାଇଥିଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दासଙ୍କ ଅଡୁଆ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମାଲିକା ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବେ ତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସୋମାଲିକା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି। ସୋମାଲିକା କହିଛନ୍ତି ପାୱାରରେ ଥିବାରୁ ଆକ୍ସନ ନେଉନି पुलिस। जयपुर गस्तर जाई विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ति मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ति। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ति नवीन। 113टी प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ति।
200 कोटी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन कर मुख्यमंत्री। यह प्रकल्प कोरापुट जिला को आग को नेबार सहायक हेब बोली मुख्यमंत्री कहते। मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी होगा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ति छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ट्रैफिक बाइक को धक्का देवा परे कार घटई राश ट्रैफिक सामना को आसी अति विभत्स दृश्य। कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना परे फसी जाइथिला। प्राय 4 किमी बाट कारटी द्रुत बेगरे माड़ी चलीथिला। कार पछरे बाइक ठाकिबा परे सेथुरु बाहरुथला निया झुल परिकणिका। कारटी को पीछा करी बाइक चालक वीडियो शूट ब्रेक पर स्वागत। व्यक्तिगत कारणरू हत्या करिसंती गोपाल दास। तदंतकारी अधिकारी को गोपाल जो सूचना देइछंती सेथिरु जणा पडुची जे मंत्री नब दास को व्यक्तिगत कारणरू गोपाल दास हत्या करिसंती। किंतु केउ व्यक्तिगत कारणरू से हत्या करिसंती ताहा भी एक रहस्य। काहींकी गुली करिथिले गोपाल दास। पुलिस को सूचना देइछंती कि गोपाल व्यक्तिगत शत्रुता पाई गोपाल करिछंती कि हत्या। जना पड़िला कारण काहींकी गुली करिथिले गोपाल दास। तदंतकारी ऑफिसर को गोपाल जो सूचना देइछंती सेथिरु अधिकारी माने गोटिए सिद्धांत रे पहुंचुछंती जे गोपाल व्यक्तिगत शत्रुता को नहीं गुली करिछंती। तेबे केउ कारणरू गोपाल हत्या कले ताकु नहीं विभिन्न चर्चा हेउछि। कोन सबु चर्चा हेउछि से विषय रे आमे आलोचना करिबा। गोपाल दास को व्यक्तिगत शत्रुता को नहीं अनेक दिगरे आलोचना होउछि। क्यों क्यों व्यक्तिगत शत्रुता जगु गोपाल दास मंत्री नब दास को हत्या करिछथि। थियोरी नंबर 1 झीर चाकरी पाई नवदास पाखक जाई गोपाल दुर्व्यवहार शिकार होइथिबा कुहा जाउछि। एही आक्रोशरू गुली मारिछंती कि निज झीर चाकरी पाई कुआरे गोपाल दास नवदास पाखक जाइथिले। सेठारे नवदास तांकु दुर्व्यवहार करिथिले। एही आक्रोशरू से एभली हत्या करिथिबा नै चर्चा हेउछि। थियोरी नंबर 2 पूर्वरु नवदास को गाड़ी अटकाई थिबारु मंत्री क्षुब्ध होई गाड़ी करिथिबा चर्चा हेउछि। एथिपाई गुली करिछंती कि गोपाल। पूर्वरु मंत्री नवदास को गाड़ी को अटकाई थिले गोपाल दास। एथिरे क्षुब्ध होई गोपाल को गाड़ी गुलज करिथिले नवदास। आउ एही राग सुझाइबा पाई जाई से हत्या करिथिबा नै मध्य चर्चा हेउछि। थियोरी नंबर 3 निज ट्रांसफर ब्रह्मपुर पाख अंचल को करबा पई नवदास को पाख को जाइथिबा बेले कुआरे गाड़ी करिथिले नब। एहा हत्याकांडर प्रमुख कारण पाल्टिला कि
गोपाल दास निजर बदली करबा पई चाहुथिले। तांको घर ब्रह्मपुर होइथिबारु सेही आखपाख अंचल को ट्रांसफर हेबा पई से चाहुथिले। ए नै नवदास को पाखकु से हत्याकांडर 3 मास पूर्वरु जाइथिले, किंतु गोपालंको निवेदन रक्षा करबा परिवर्ते नवदास तांकु गाली गुलज करथिले। थियोरी नंबर 4 कांग्रेस विधायक थिबा बेले ट्राफिक रे अटकाइबा नै गोपालंकु नब हाथ उठाइथिबा अभियोग। से कारणरू टार्गेट कले कि गोपाल। नवदास कांग्रेस विधायक थिबा समय तांकु ट्राफिक रे अटकाइथिले गोपाल दास। फलरे गोपालंक उपरकु हाथ उठाइथिले नब। एथिरे उत्क्षिप्त होई पड़िथिले गोपाल दास। राग सुझाइबाकु जाई से एही हत्याकांड करिथाई पारंती बोली मध्य चर्चा हेउछि। थियोरी नंबर 5 राजनैतिक किंबा व्यावसायिक कारणरू गोपालंकु सुपारी किलर भावरे व्यवहार करा जाइछि कि? अन्य एक थियोरी आधार रे नवदास को हत्या करिबा पछरे कोनोसी राजनैतिक किंबा व्यावसायिक कारण थाई पारे। जो अदृश्य हाथ थिबा कुआ जाउछि से हुए तो गोपाल दास को हत्या करिबा पई सुपारी देई थाई पारंती। आउ एथि पई गोपालंकु अनेक प्रकार प्रलोभन मध्य देखा जाइथिबा चर्चा हेउछि। सप्ताह मध्य नवदास को गोपाल दास 5 थर हत्या करिबा पई उद्यम करथिले। हत्या हेबा दिनरू पूर्व 15 दिन जाए गोपाल दास नवक सरबाहाल स्थित घर सामने 5 थर चक्कर काटिथिले। प्रत्येक थर गोपाल निज बंधुक नहीं जाउथिले। से नवदास को घर भीतर को कोनोसी थर जाई नाहंती। बाहरे थाई से नवंक विषय आखपाख लोकंक ठारू खबर नेउथिले। तेणु एही हत्यार षड़यंत्र बहु पूर्वरू करा जाइथिबा चर्चा हेउछि। एसबु कारण पाई गोपाल हत्या करिसंती ना एहा पछरे आउ केउ षड़यंत्र अछि ताहा तदंत परे जणा पड़िबो। अन्यपटे गोपाल निज भड़ा घरे देखाइछंती डेमो। एहा सहित गांधी छक स्थित फांडी रे भी क्राइम ब्रांच गोपालंकु नै क्षय खोजिछि। फाइनल घटना को 6 दिन बीती गलानी, तथापि भी हत्या रहस्यरू परदा उठाई पारिनी क्राइम ब्रांच। एही रहस्य उन्मोचन करिबा पई क्राइम ब्रांच को आउ केते दिन समय लागिबो ताकू ही समस्तंक अपेक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। रहस्यर चक्रव्यूहरे घुरी बुलुछि मंत्री नब दास को हत्या। एही हत्याकांडर पर्दाफाश तो निश्चित भाव हेब, किंतु सेही पर्दाफाश भितरे लुचि रहितिबा अनालोचित अध्याय गुड़िकर मध्य पर्दाफाश करिब तो क्राइम ब्रांच, ताहा एक बड़ प्रश्न। समय सरिछि आज स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखुछु। नमस्कार। एहार सह प्रायोजक मरीगला मानविकता। महिला यात्री स्वास्थ्य गुरुतर हेबारु रास्तार ओह्लैदेले बस कर्मचारी। बस ओह्लैबार किछि समय पर महिला यात्री मृत्यु होइछि। पुअर आखि सामने चलीगला मार जीवन।
एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथ में। गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँव सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल नेउथिले। गाँ को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले कुमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ा और मां को मेडिकल नेबाकू सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी। रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लई पड़ाई बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटी। बस कर्मचारी एपरी काम को निंदा करिसेंती अंचलवासी। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाईकोर्ट निर्देश देइछंती। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देइछंती। विवाह विवाद को नहीं सोमालिका हाईकोर्ट द्वारस्थ होते हाईकोर्ट निर्देश पर एवं विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी। सोमालिका कहते पावर रे थिबारु एक्शन नेउनी पुलिस। जयपुर गस्तर जाई विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ती मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ती। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ती नवीन। 113टी प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ती। 200 कोटीर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ती मुख्यमंत्री। एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आगक नेबारे सहायक हेब बोली मुख्यमंत्री कहछन्ती। मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी हेबा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देइथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ती छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ट्रैफिक बाइक को धक्का देबा परे कार घटैछि राश ट्रैफिक। सामना को आसिछि अति विभत्स दृश्य। कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना परे फसी जाइथिला। प्राय 4 किमी बाट कारटी द्रुत बेगरे माड़ी चलिथिला। कार पछरे बाइक ठाकिबा परे सेथुरु बाहरुथला निया झुल परिकणिका। कारटी को पीछा करी बाइक चालक वीडियो शूट करथिले। ए दृश्य देखिले आपनक मनर को आसीजिवो फॉर्मूला 1 कार रेस दृश्य। गुरगांव सेक्टर 65 रे घटना घटी। पुलिस सूचना अनुसार ए दुर्घटना रे केही आहत होई नांती। केन्दुझर बलानी थाना हादत मृत्यु घटना। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक विमल कुह भाषा केसरी। थमुनी आदानी झड़ संसद में पुणी सरकार को घेरिले विरोधी। जुग्म संसदीय कमिटी गठन सहित हिंडेनबर्ग अभियोगर तदंत पर दाबी। हो हल्ला भितर सोमवार जाए उभय गृह मुलतवी। शेयर बजार में अस्थिरता चिंतार निवेशक। जोशीमठ पर जम्मू काश्मीर डोडा स्थानीय अंचल कोठारे सृष्टि होईछि फाट बढ़िबारे लागिछि विपद। 20 रु अधिक परिवार को सुरक्षित स्थानांतर। निर्माण काम एवं बहुथिबा पानी पाई कोठा भांगुथिबा फाटुथिबा अनुमान। स्थिति उपरे नजर रखिछन्ति विशेषज्ञ टीम। पंजाब कांग्रेस निलंबित हेले बीजेपी नेता अमरिंदर सिंह पत्नी प्रीनीत कौर। दल विरोधी कार्य सस्पेंड नोटिस जारी कला श्रृंखला कमिटी। कांग्रेस रे रही बीजेपी काम करुथिबा अभियोग। बीबीसी डॉक्यूमेंटारी ब्लॉक करने मामला केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। ब्लॉक करने को दि जाइथिबा निर्देशनामार ओरिजिनल कॉपी दाखल पर निर्देश। यह जरूरीकालीन क्षमता उपयोग सहित समान कहले सर्वोच्च कोर्ट। लोकंकु केते फायदा देबो नुआ टैक्स नियम। बजेट पर केंद्र अर्थमंत्री नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ को सहित साक्षात्कार। कहले आयकर बोझ कम करबा पई होईछि प्रयास। अदानी प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिले निर्मला सीतारमण। स्वास्थ्य मंत्री नब दास को गुलिकांड मामला। गोपाल क्वार्टर्स मिली किछि गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र। हाथलेखा कागज और डायरी मिली सूचना। पायखाना टांकी मिली चिठी सहित लिखिथिबा मानिले गोपाल। हेडलाइंस रो प्रायोजक विमल कुह भाषा केसरी। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed.
थमिबा ना धरुनी आदानी झड़ पार्लियामेंट रे विरोधी सरकार को घेरी रखिथिबा बेले स्टॉक मार्केट रे बहुछि रक्तर सुओ गुरुवार भली शुक्रवार मध्य विरोधी मेली करथिले सेमानंको एका जीत सरकार जुग्म संसदीय कमिटी किंबा सुप्रीम कोर्ट को तत्वावधान रे हिंडेनबर्ग आनिथिबा अभियोगर तदंत करांतु पार्लियामेंट रे प्रबल हो हल्ला करिसंती विरोधी हेले सरकार किछि सुनी नाहंती विरोधी सबु प्रस्ताव को सरकार प्रत्याख्यान कर दैछंती विरोधी हट्टगोल एवं हो हल्ला थमिबा ना धरी नथिबारु उभय गृह को आसंता सोमवार जाए मुलतवी रखा जायछि। अदानी ग्रुप उपरे हिंडनबर्ग रिपोर्ट को नहीं पार्लियामेंट रे छड़ गुरुवार जो स्थिति देखा मिलता शुक्रवार मध्य सैया देखा मिली विरोधी अभियोग यह बड़ घोटाला सरकार जानतरे यह होइछि कोटी कोटी निवेशक एवं चिंतार तेणु घटनार तदंत पर जुग्म संसदीय कमिटी गठन करा जाऊ किंबा सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष तत्वावधान रे कमिटी गठन करा जाऊ। जनता की मेहनत की कमाई इस तरीके से मार्केट में वाइप आउट हुआ है, जिस तरीके से इन पे आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन होना चाहिए, वहाँ पे ये सारी चर्चा रखनी चाहिए। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? हमारा काम सरकार का कोई नहीं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट उपरे तदंत दाबी रे उभय गृह रे होहल्ला करथिले विरोधी तेबे लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला विरोधी अभियोग को अमूलक बोली कही खारज कर देथिले। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ मध्य विरोधी सबु प्रस्ताव को अग्राह्य कर देइछंती। विरोधी हट्टगोल एवं होहल्ला करी कक्ष त्याग करिथिबा बेले सरकार उभय गृह को आसंता सोमवार जाए मुलतवी घोषणा करिछंती। अगर हमारे पीएसयूज एलआईसी वगैरह उनके स्टॉक्स उनके स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उस विषय पे साधारण आदमी के सेविंग्स जब एलआईसी और पीएसयूज के अंदर है तो आम आदमी को जानना चाहिए कि देखिए हमारे पैसे क्या सेफ है, सुरक्षित है, सरकार कुछ कर रहे हैं, सरकार क्या सोच रहे हैं इसके बारे में हमें प्रश्न पूछने दीजिए, सरकार को जवाब देने दीजिए। अदानी ग्रुप उपरे हिंडनबर्ग झड़ प्रसंग रे सरकार आलोचना किंबा तदंतर ना धरु नथिबा बेले विरोधी भिन्न संदेह करिसंती। कंपनी मुख्य गौतम अदानींकर पासपोर्ट जबत करने को प्रधानमंत्री, एनफोर्समेंट डायरेक्टर एवं सीबीआई को पत्र लिखिछंती आप सांसद संजय सिंह। 267 का नोटिस मैंने आज भी दिया है, कल भी दिया था और हमारी एक ही डिमांड है कि इस पे जेपीसी बने, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी हो इसकी। ये अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट उपरे स्पष्टीकरण दे सारिछि अदानी कंपनी। अदानी एंटरप्राइजेस रो 20,000 कोटी टंकार फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर प्रत्याहार करि नेछि कंपनी। कंपनी अध्यक्ष गौतम अदानी ए नै वीडियो वार्ता माध्यम रे सूचना दैछंती। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. गत सप्ताह रे अमेरिकीय शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग अदानी ग्रुप रे होइथिबा विदेशी पुंजीनिवेश उपरे अनुसंधानमूलक रिपोर्ट खुलासा करिथिला आ सेबेठारु अदानी ग्रुप रो सबु शेयर क्रमागत भाव में ह्रास पाइबारे लागिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। उत्तराखंड जोशीमठ और कर्णप्रयाग पर जम्मू काश्मीर डोडा किछि कोठारे फाट सृष्टि हेबा परे लोकंक मनरे भय सृष्टि होइछि। डोडा जिला थाद्रु म्युनिसिपाल अंचलर 6टी कोठारे गत डिसेम्बर मासरे फाट सृष्टि होइथिला। वर्तमान से सबु फाट बढ़िबारे लागिछि। संपृक्त अंचल धीरे धीरे दबुथिबा प्रशासन स्पष्ट करिथिबा बेले 20 रु अधिक परिवार को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। तदंत करी विशेषज्ञ कमिटी संपृक्त अंचल निरापद नुहे बोली कहिबा परे लोकंकु स्थानांतर करा जायछि। आखपाखरे मेसीन द्वारा निर्माण कार्य चलिथिबा बेले बहुथिबा पानी एभली परिस्थिति सृष्टि करि थाइपारे बोली अनुमान करा जाउछि। थात्रु अंचल में तुरंत प्रतिकारमूलक पदक्षेप नेबा पई गत जनवरी 29 तारिख में किसी सिविल सोसाइटी जम्मू काश्मीर मुख्य शासन सचिव को दाबी पत्र देथिले।
कोई 10-15 दिन से हो रहे हैं। हम बिल्कुल अपने घर में बैठने के लायक नहीं हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है। हम कैसे रहें यहाँ पे? हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं इस टाइम। हमें कहीं ना कहीं मतलब जगह होनी चाहिए जहाँ हम बैठ सकें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा है कि SCPWD ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट रात को की थी। नेशनल हाईवे का जियोलॉजिस्ट रात को भी आया था। सुबह जियोलॉजिस्ट की टीम भी नेशनल हाईवे की आई थी। वो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट आज शाम तक जो है देंगे। फर्दर वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो है डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग से भी बात की है। वहाँ से भी जियोलॉजी माइनिंग से भी एक प्रॉपर असेसमेंट की टीम बन रही है कि इसके रीजंस क्या है। नेशनल हाईवे के भी कर्नल नागिंदर गिल GM वगैरह जो है वो खुद भी आज मौके पे आ रहे हैं। अब सारी कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ये एरिया सिंक हो रहा है, इसका अब बचना मुश्किल है। अभी सरकार की यही कोशिश है कि जो नियर बाई एरियाज में डैमेज ना हो, टेक्निकल एक्सपर्ट ली जाए ताकि इस डैमेज को कन्फाइन यहीं तक किया जाए और ना। बीजेपी नेता तथा पूर्वतन पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह को पत्नी प्रीनीत कौर कांग्रेस निलंबित। दल विरोधी कार्य तांकु निलंबन करा जायथिबा बेले नोटिस जारी करिछि कांग्रेस श्रृंखला कमिटी। काहेकि तांकु दलरू बहिष्कार करा न जिवो से नै 3 दिन मध्यरे जवाब रखिबा पई नोटिस रे कुआ जायछि। पंजाब रे बीजेपी को शक्ति एवं संगठन वृद्धि पई प्रीनीत कौर भितरिया भावरे कार्य करुथिबा श्रृंखला कमिटी संपादक तारिक अनवरक निकटरे अभियोग करिथिले पंजाब PCC सभापति अमरिंदर राजा, जहां आधार रे श्रृंखला कमिटी एमिति एक्शन नेछि। पटियालारू कांग्रेस लोकसभा सांसद अछंती प्रीनीत कौर। नवजोत सिंह सिद्धू सहित विवाद को नहीं 2021 रे पंजाब मुख्यमंत्री पदरू विदा होइथिले कैप्टेन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस इस्तीफा दे पंजाब लोक कांग्रेस गठन करथिले। बीजेपी सहित मेंट करी 2022 विधानसभा निर्वाचन निज दलरू लड़ीथिले से, किंतु होम टॉप पटियालारू से हारी जाइथिबा बेले खाता खुली पारि नथिला पंजाब लोक कांग्रेस। आउ निर्वाचन मासक परे पंजाब लोक कांग्रेस को बीजेपी सहित विलीन कराई दैछंती कैप्टेन अमरिंदर सिंह। बीबीसी डॉक्यूमेंटारी ब्लॉक करने मामला रे केंद्र सरकार को सुप्रीमकोर्ट को नोटिस। डॉक्यूमेंटारी को सोशल साइट रे ब्लॉक करने सरकार देथिबा निर्देशनामा रे ओरिजिनल कॉपी सुप्रीमकोर्ट रे दाखल करने नोटिस रे कहा जायछि। काहेकि डॉक्यूमेंटारी को भारत रे ब्लॉक करागला, यह जरूरी कालीन बेलर क्षमता उपयोग सहित समान एमिति अभियोग करी वरिष्ठ सांबादिक एन राम, वरिष्ठ आईनजीवी प्रशांत भूषण एवं टीएमसी सांसद महुआ मैत्र सुप्रीमकोर्ट रे मामला दायर करिसेंती, जहां आधार रे केंद्र सरकार को नोटिस जारी करिसेंती सर्वोच्च अदालत। गोध्रा परवर्ती हिंसाकांड को नहीं बीबीसी 2टी डॉक्यूमेंटारी प्रस्तुत करिछि, जोथिरे सेतेबेलर गुजरात मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टार्गेट करा जायछि। एही डॉक्यूमेंटारी उद्देश्यमूलक भाव एक षड्यंत्र बोली सरकार प्रथमरू कहि आसुछन्ति। 2021 सूचना प्रजुक्ति आईन अनुसार सरकार विवादीय बीबीसी डॉक्यूमेंटारी को ब्लॉक करिछन्ति। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है द मोदी क्वेश्चन, उस पर जो सरकार ने बैन लगाया है, उसको चुनौती देने वाली पिटिशन जो एन राम, महुआ मोइत्रा और मैंने फाइल करी थी, उसकी आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस इशू किया है और ये बोला है कि 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दें और जो भी ऑर्डर्स पास करे गए हैं इसके तहत उसकी पूरी फाइल सरकार के कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें और इसकी अगली सुनवाई अप्रैल की कोई डेट लगाई गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। चलित बजेट ऐतिहासिक बजेट, देशर समस्त वर्गर लोकंक विकास पाई यही बजेट। नुआ टैक्स नियम समस्त वर्गर लोकंकु अनेक फायदा देव। आयकर बोझ कम करने सरकार एभली निष्पत्ति नहीं। बजेट पर केंद्र अर्थमंत्री सहित नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी नहीं साक्षात्कार में एभली कहते निर्मला सीतारमण। से भली आदानी प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिछन्ति केंद्र अर्थमंत्री। You know, your budget was very well received by the markets. In fact, while you were speaking, the markets were really going up. But you know, the rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. You know, there is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. The details is what has brought the difference in touching so many different sectors and segments of our society.
We've got something on offer for each one of them. So therefore, if it's being received very well, I'm very glad. But of course, that motivates me to be able to now take it upon myself to better implement it down to the last person who's aimed at. So I would think the impact of the budget, the immediate impact of the budget on the market, and subsequent to, let's say, for whatever reason it trailed back, I think in the next few days the budget's impact will still continue to hold the markets high. You know, the opposition is taking aim at your government, saying that the banking and insurance companies have large exposure in Adani stocks. You know, and the investors and the broader market is looking to you for some direction on this issue. Is our banking and insurance system resilient to take this shock? I want to recall the words, you know, coming from the horse's mouth has greater credibility. Both SBI and LIC have issued detailed statements, and I know the chairperson or the CMD has himself come out and explained how they are not overexposed or whatever they said. Yes. And also said, look, we are sitting over profits for the exposure that we have, which is well within the limit. That's what I understand they have Yes. said, and I've again read it through the media. They They have very clearly said that their exposure is very well within the permitted limits, and that they are, even now with the valuation falling as well, they are still sitting over profit. So if that is the horse's mouth, as I refer to, word from the horse's mouth, but in general, both with the RBI, we do have the Financial Stability Board's meeting which happens once in 6 months. We meet, even recently we have met. So I can only very clearly say, both the RBI and we, because of the FSB's meeting, Financial Stability Board's meeting, know that the Indian banking system, if anything, at this stage, for me to use this word, I want to use it with a sense of responsibility, like having gone through the twin balance sheet problem. Indian banking sector today is at a comfortable level, with their NPAs coming down to absolutely low levels, recovery is happening, and their position is very sound, which gets reflected in the fact that when they go to raise monies in the market, they are absolutely comfortably raising monies as well. So the entire macroeconomic analysis which any expert would do also highlights the fact that how comfortable the Indian banks are placed in. That cannot be that if they are at risk. Some of the global investors as well, you know, as a knee-jerk reaction, seem to have pulled out some money in the last couple of days. Some have put, you know, fresh investments on hold. What would your message be to the global investors? India remains as before an absolutely well-governed, stable government, and also very well, regulated financial market. And as a result, I think the investor confidence which existed before shall continue even now. Our regulators are normally very, very stringent about certain governance practices, and therefore they should, one instance, however much talked about globally it may be, I would think is not going to be indicative of how well Indian financial markets are governed. So many lessons have been learned over the decades, and therefore I think our regulators have kept our market well in prime and prim condition. News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. ମରିଗଲା ମାନବିକତା। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଅର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା ମାର ଜୀବନ।
एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथरे गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँव सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल नेउथिले। गाँव को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले कुमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ता और मां को मेडिकल नेबाकू सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी। रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लई पड़ाई बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटी। बस कर्मचारी एपरी काम को निंदा करिसेंती अंचलवासी। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाईकोर्ट निर्देश देइछंती। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देइछंती। विवाह विवाद को नहीं सोमालिका हाईकोर्ट द्वारस्थ होते हाईकोर्ट निर्देश पर एवं विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी। सोमालिका कहते पावर रे थिबारु एक्शन नेउनी पुलिस। जयपुर गस्तर जाई विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ती मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ती। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ती नवीन। 113टी प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ती। 200 कोटी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ती मुख्यमंत्री। एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आग को नेबारे सहायक हेबो बोली मुख्यमंत्री कहछन्ती। मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी होगा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देइथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ती छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ड्राइविंग बाइक को धक्का देवा परे कार घटैछि राश ड्राइविंग। सामना को आसिछि अति विभत्स दृश्य। कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना परे फसी जाइथिला। प्राय 4 किमी बाट कारटी द्रुत बेगरे माड़ी चलिथिला। कार पछरे बाइक ठाकिबा News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more safed, more safed. मिलिला गोपालंक डायरी। गोपालंक क्वार्टर्स आज मिली किसी गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र ता सहित हाथलेखा कागज और डायरी मिलिथिबा कहिछि क्राइम ब्रांच। जबत डायरी को एबे जांच करुछि क्राइम ब्रांच टीम। डायरी रे किसी गुरुत्वपूर्ण सूचना थाई पारे। सेबडे पाइखाना टांकी मिलिथिबा चिठी को नहीं क्राइम ब्रांच करिछि खुलासा। गोपाल मानिछंती से निजे लिखिछंती चिठी। पाइखाना टांकी 20 रु अधिक कागज टुकड़ा मिलिथिला। एथिरे नाली रंगरे किछि लेखा जाइथिला। आ एई चिठीर सत्यासत्य जानिबा पई हैंडराइटिंग ब्यूरो को पठाजिबे। नवदास को हत्या मामला रे घांटुछि क्राइम ब्रांच। रिमांडर तृतीय दिन में अभियुक्त गोपाल को नहीं क्वार्टर्स और फांडी तनाघना करिसेंती तदंतकारी टीम। खोलताड़ बेले उभय जगार अनेक गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र मिली क्राइम ब्रांच हाथ में। फांडी जबत एक कार डिकी बाहरी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पाइखाना टांकी मिलिथिबा कागज टुकड़ा सहित सामंजस्य थिबा पुराए कागज। एई कागज हत्या रहस्य खोलिबारे सहायक हेबो बोली आशा रखिछि क्राइम ब्रांच। खोलिब नवदासंक हत्या रहस्य। क्राइम ब्रांच करुछि तनाघना। गोपालंकु नै घांटुछंती तदंत अधिकारी। 5टी बोलेरो रे अछंती, गोटे विंगर रे अछंती एवं पछरे गोटे पुलिस रो बस मध्ये रहिछि। ये बड़ टीम टी वर्तमान क्राइम स्पॉट को जाउछु। स्वास्थ्य मंत्री नवदास हत्यार खियो खोजुवा क्राइम ब्रांच अभियुक्त गोपाल दास को नहीं चलाई तनाघना। गुलिकांडर 6 दिन में तदंतकारी टीम गोपाल को ब्रजराज नगर थिबा तार सरकारी क्वार्टर्स को नहीं जाइथिला। सेठारे होइथिला बड़ धरणर छानबीन। तदंतकारी टीम रे अछंती क्राइम ब्रांच रो अधिकारी और फोरेंसिक टीम सदस्य। गोपाल क्वार्टर्स रे हत्या को नहीं किछि षडयंत्र होइथिला कि? मंत्री नवदास को गुली करी हत्या पाई गोपाल दास क्वार्टर्स रे होइथिला कि किछि रणनीति? सबु नहीं जांच चलीथिला। प्राय 3 घंटा रु अधिक समय धरी चलथिला एही प्रक्रिया। यहाँ पर क्वार्टर्स गोपाल को नहीं बाहरी थिला क्राइम ब्रांच।
एही समय गोपालଙ୍କ प्रतिक्रिया जानिबा को चाहिथिले गणमाध्यम प्रतिनिधि हेले किछि कहि नथिले गोपाल। यापर क्वार्टर्सरू तांकु बाहर करी से कार्यरत थिबा गांधी छक फांडी को निया जायथिला। बेस किछि समय धरी फांडी रे चलथिला जांच प्रक्रिया। एही समय रे फांडी रे जबत थिबा एक कार को तन्न तन्न करी जांच करा जायथिला। एही कार रो सीट तळ डिकी आदि खोली खोजिथिला टीम। शेषरे गाड़ी बाहर थिला किछि कागज जोपरी कागज पाइखाना टांकी बाहर थिला समान समान रंगर कागज बाहरिला जबत गाड़ी गाड़ी डिकी रे कागज गुड़िक थिला जहाकू जबत करिछि क्राइम ब्रांच। जहाँ बाहर समय आम देखीचु किसी कागज पत्र फाइल धरी क्राइम ब्रांच टीम अर्थात आम गोटे कथा कहि परिबा जे क्राइम ब्रांच हाथ में किसी गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र लगी। सेपटे क्राइम स्पॉट रे भी तनाघना करिछि क्राइम ब्रांच। मेटाल डिटेक्टर साहाय्य गुली खोजुछंती तदंत अधिकारी। गुलिकांड स्थानर आखपाख अंचल रे गुली खोजुछि टीम। बुली बुली खोजुथिले भी क्राइम ब्रांच को मिलिनी सफलता। एहारी भितरे सबुठु बड़ कथा हेउछि घटना दिन गोपालଙ୍କ पाखरे थिला फुल लोडेड रिवॉल्वर जहां भितरे थिला 6टी गुली। लोडेड रिवॉल्वर सहित अधिक 18टी गुली नहीं घटनास्थल को जाइथिले गोपाल दास। अर्थात गोपालଙ୍କ पाखरे थिला मोट 24टी गुली। जदि सेमिति कोनोसी परिस्थिति सृष्टि होइथांता तेबे एहा द्वारा महाआतंक सृष्टि करि पारथांते गोपाल। एबे जहां चर्चा हेउछि एते परिमाणर गुली नै काहेकि घटनास्थल को जाइथिले गोपाल दास तांकर आउ किछि उद्देश्य थिला कि। हत्यार कारण जानिबा पई आप्राण उद्यम करुछि क्राइम ब्रांच। रिमांड तृतीय दिन में गोपाल को माराथन जेरा सह विभिन्न जगह को नहीं तदंतकारी टीम। एबे अपेक्षा प्रकृत कारण पाखरे पहुंची पारुछि कि नहीं क्राइम ब्रांच। झारसुगुड़ारू कैमरा पर्सन गौर प्रसाद राजगुरु सह जितेन्द्र देवता, त्रिविक्रम प्रधान और सत्यजित सेनापति, न्यूज 18 ओडिया। पठान जबरदस्त रोजगार। किंग खान अभिनीत बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म 9 दिन में सारा विश्व में 700 कोटी अधिक टंका रोजगार कर सारा। केवल भारत में यह 300 कोटी अधिक टपी सारा। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित और शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म पठान गत जनवरी 25 तारिख में रिलीज होती। रिलीज पूर्व बेसरम रंग गीत को नहीं बेस विवाद को आसीथिला पठान। सेंसर बोर्ड हस्तक्षेप पर विवादीय सीन हटा जाइछि तथापि पठान क्रेज कमी ना। नवम दिन में भी हॉल रे जबरदस्त रूल करिछि पठान। खबर पाणीपागरु आहरी 24 घंटा राज्य में जारी रहिबो शीतलहरी। राज्य मध्य को प्रवेश करुथिबा उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिगरु शुष्क थंडा वायु प्रभाव में आगामी 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और कंधमाल जिलार गोटे दुईटी स्थान में शीतलहरी जारी रहिबो। गत 24 घंटा मध्य तलमुहा होइछि पारद। बारिपदा, टिटलागढ़, नयागढ़ में सर्वनिम्न 3 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइथिबा बेले पारादीप रे 3.1 डिग्री, ढेंकानाल रे एवं दारिंगबाड़ी रे 3.5 डिग्री, भवानीपाटना रे 4.4 डिग्री और जी उदयगिरी रे 4.6 डिग्री सहित फुलबाणी रे 5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। आसंता 24 घंटा पर शीतर प्रकोप कमिबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। News Flash presented by Safed Detergent Powder. More choice, more Safed, more Safed. मरीगला मानविकता। महिला यात्री स्वास्थ्य गुरुतर होबारु रास्तार ओह्लैदेले बस कर्मचारी। बस ओह्लैबार किछि समय पर महिला यात्री मृत्यु होइछि।
पुअर आखि सामने चलीगला मार जीवन एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथरे गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँव सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल नेउथिले गाँ को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले कुमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ा और मां को मेडिकल नेबाकू सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लई पड़ाई बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटी बस कर्मचारी एपरी काम को निंदा करिसेंती अंचलवासी बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाईकोर्ट निर्देश देते सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देते विवाह विवाद को नहीं सोमालिका हाईकोर्ट द्वारस्थ होते हाईकोर्ट निर्देश पर एवं विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी सोमालिका कहते पावर एक्शन नेउनी पुलिस जयपुर गस्तर जाए विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ति मुख्यमंत्री विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ति या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ति नवीन 113 प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ति 200 कोटी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ति मुख्यमंत्री एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आगक नेबार सहायक हेब बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी होगा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ति छात्र छात्री गुरगांव रे राश ट्रैफिक बाइक को धक्का देबा परे कार घटैछि राश ट्रैफिक सामना को आसिछि अति विभत्स दृश्य कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना परे फसी जाइथिला प्राय 4 किमी बाट कारटी द्रुत बेगरे माड़ी चलिथिला कार पछरे बाइक ठाकिबा परे सेथुरु बाहरुथला निया झुल परिकणिका कारटी को पीछा करी बाइक चालक वीडियो शूट करथिले ए दृश्य देखिले आपनक मनर को आसीजिवो फार्मूला 1 कार रेस दृश्य Nirmala ji, thank you so much for giving us this first budget interview to a streaming service and a private news channel. Through this interview, you will reach the length and breadth of the country through all our News 18 channels, CNBC TV 18, CNN News 18, News 18 India, and a slew of digital properties, moneycontrol.com, First Post, and News18.com. Thank you so much for this. My first question, this is your 5th budget. You were navigating 2 epochal events in the last couple of years. One was the ongoing pandemic and its impact, and the other was the war in Ukraine. What I would like to understand from you is what was going on in the mind of Nirmala Sitharaman, and how she was dealing with policy making in these last 5 historic years. Starting with a very difficult question, because difficult not for any other reason but to capture the experiences, the as I say, anubhav, going through that, and also to look back at it now when you're probably slightly out of it. It's very difficult to describe in, let's say, a short brief answer. I can understand. But yet if you have to really capture it, I had no precedent before me to handle such a situation. There were no given templates. There were no examples to follow. And there were no theories which would have worked in such context. So essentially we were going by continuous conversation with all kinds of stakeholders. Those who have directly some thing to say about the industry and its suffering, MSME and its suffering, or even those who are observing it with a more discerning eye. So we had to engage in conversation continuously with all people, take their view, wait for ourselves to see which one is all right, which is more suitable for us and which is not. Yes. And also take courage in saying it may not work out for us in one particular way, because eventually somewhere all this has got to be answerable. And therefore I think I would immensely recall the ways in which Honorable PM led the conversation with us. He would never tire himself
from meeting us. He would never say not today. So with all necessary precautions taken for COVID, following the protocol, we would still meet and talk about things. But eventually, whatever has been at that time decided and put out as schemes, one thing which was not so much relevant for dealing with the pandemic itself, but yet had to be done, was not to let go the opportunity to continue the reform process. Yes. So that was carried on. But we may do so many things. We may have a stable leadership, clear-headed leadership which stands by us and gives us the guidance under the Prime Minister. And we may come up with the proposals and also launch some specific schemes at that time to benefit, to give relief and so on. Eventually it is the way in which the people of India have absorbed it all. You know, absorbed it and found best ways to go around it with this kind of a succor which is coming from the government, or some hand holding which is coming from the government. May not be adequate, but so the credit goes to the people of India for having so been in clued position with the government's, every decision making, and kept pace with it all. And that is why today we are where we are. Entirely the way in which people of India have absorbed whatever has been done from the government side and put it to effect on the ground. Well, you make a very important point. I think you never gave up on reforms in the last so many years. Despite, come what may, pandemic, war in Ukraine, and that I must concede. I clearly remember that many experts and economists at that time panned the government, panned India, that we were not doing enough for stimulus in the COVID period. And I remember they cited examples of Western economies, European economies, saying that we should at least give 10 to 20% of GDP. That's the bare minimum we should do. Now in hindsight, do you think that it was good to ignore that advice and be tight-fisted, and that is showing up today? Yes, that is why in answering earlier your question, we had to do our homework for every such input which came in at that time. Why? We could have always said, no, this is what appeals to us, and we would have gone ahead. No, but we had to consider every such advice which came in, and also go through the depths of what it would mean, how will it be executed, whether it can really bear the results and so on, only because whether we choose one way or not, we should know why we have not chosen a particular way and be able to justify saying our understanding was this and that's why we didn't take it. Today I have the advantage of looking back at it and say, good that I didn't take it because the results would have been very different. But the fact remains that we went through every one of the suggestions with equal open-mindedness and rigor. Nirmalaji, if I look at this budget, coming to this budget, the central theme, and you've elaborated, you've articulated it in your speech subsequently as well, but I would still like to ask this question, that there is a big push to capital expenditure on one hand, on the other you've also given a lot of money into the hands of the middle class and the rich, so that there is a consumption boom. All this while keeping the fiscal discipline in place, as you had promised, 5.9%, so that's giving some comfort to everyone. What I want to understand is, what are the few outcomes, big outcomes that you're looking at from this budget? If well executed, if the states and the center work together, I expect tourism to really see a sea change. Flow of people coming in both from one other states and also from abroad. It should actually be a good way of keeping the economy active. If that is going to be this year and also medium term, I also see the momentum that PM Vikas scheme is going to come up with. Because what it does, at least from the way in which I have done this work on understanding that scheme and to see how best it can be tailored, it touches that segment which is sort of self-employed, which has skills, which may be traditional skills, but which are very productively used
and that itself has a huge market, niche market of its own. If by launching PM Vikas we will be able to touch upon a large section, not confined to any particular few castes which go by the description Vishwakarma, but we are including everybody who uses his hand with some tools, produces things. That's a huge layer which doesn't get covered under A scheme or B scheme or C scheme. Now we are touching them. We are actually giving that material difference of receiving better attention, better raw material, better marketing, better professionalized way of aggregation and so on, with better fair rated credit from bank and so on. I think that layer which has remained unseen, untouched till now, but very recognized because of the quality of products that they produce, will now make a big difference to us. Equally, the push on green is not going to be any less. In every sector, there's been provisions made in the budget for them to do the transition from depending on fossil fuel to a renewable energy source-based fuel. And that will touch every walk of life, not just farmers, not just women in household, both from the point of view of user and also producer. You will generate enough power for yourself and be able to also sell it. And the final but most important, I would think, is the way we are going to shake up and also give life to the self-help women's groups which exist in the rural parts of the country. Some states have extraordinarily done well on SHGs in the last few decades. It's not as if they have been formed only today. A couple of decades they've been on the ground. 81 lakh of them groups exist, and it is they who we are now trying to aggregate, bring them together like clusters, see what they want to do in terms of production or services. For instance, I just bring in a very private sector example. Lijjat, the papad, after all was a women's somewhat self-help group. Look at the kind of product, the quality, the branding, the perception about what is Lijjat can always be superior in quality. There's never a compromise on it, and people seek it, even though from the general papad pricing it is slightly higher in price, but still people prefer it. So like that, SHGs, and I don't want just to end with papad making, it should be everything else also. So depending on the skill sets available, the raw material available, we want to make sure that SHGs do come in to benefit from government policy and also through digital marketing, run professionally as well. That's interesting. Your budget was very well received by the markets. In fact, while you were speaking, the markets were really going up. But the rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. There is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. The details is what has brought the difference in touching so many different sectors and segments of our society. We've got something on offer for each one of them. So therefore, if it's being received very well, I'm very glad. But of course, that motivates me to be able to now take it upon myself to better implement it down to the last person who's aimed at. So I would think the impact of the budget, the immediate impact of the budget on the market, and subsequent to, let's say, for whatever reason it trailed back, I think in the next few days the budget's impact will still continue to hold the markets high. The opposition is taking aim at your government, saying that the banking and insurance companies have large exposure in Adani stocks. And the investors and the broader market is looking to you for some direction on this issue. Is our banking and insurance system resilient to take this shock? I want to recall the words, coming from the horse's mouth has greater credibility. Both SBI and LIC have issued detailed statements, and I know the chairperson, the CMD, has himself come out
and explained how they are not overexposed or whatever they said, and also said, look, we are sitting over profits for the exposure that we have, which is well within the limit. That's what I understand they have said, and I've again read it through the media. They have very clearly said that their exposure is very well within the permitted limits, and that they are, even now with the valuation falling as well, they are still sitting over profit. So if that is the horse's mouth, as I refer to, word from the horse's mouth, but in general, both with the RBI, we do have the Financial Stability Board's meeting, which happens once in 6 months. We meet, even recently we have met. So I can only very clearly say, both the RBI and we, because of the FSB's meeting, Financial Stability Board's meeting, know that the Indian banking system, if anything, at this stage, for me to use this word, I want to use it with a sense of responsibility, like having gone through the twin balance sheet problem, Indian banking sector today is at a comfortable level, with their NPAs coming down to absolutely low levels, recovery is happening, and their position is very sound, which gets reflected in the fact that when they go to raise monies in the market, they are absolutely comfortably raising monies as well. So the entire macroeconomic analysis which any expert would do also highlights the fact that how comfortable the Indian banks are placed in. That cannot be that if they are at risk. Some of the global investors as well, as a knee-jerk reaction, seem to have pulled out some money in the last couple of days. Some have put, fresh investments on hold. What would your message be to the global investors? India remains as before, an absolutely well-governed, stable government, and also very well, regulated financial market. And as a result, I think the investor confidence which existed before shall continue even now. Our regulators are normally very, very stringent about certain governance practices, and therefore they should, one instance, however much talked about globally it may be, I would think is not going to be indicative of how well Indian financial markets are governed. So many lessons have been learned over the decades, and therefore I think our regulators have kept our market well in prime and prim condition. मरीगला मानविकता महिला यात्री स्वास्थ्य गुरुतर हेबारु रास्तार ओह्लैले बस कर्मचारी बस ओह्लैबार किछि समय पर महिला यात्री मृत्यु होईछि। पुअर आखि सामने चलीगला मार जीवन। एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथरे। गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँवर सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हस्पिटाल नेउथिले। गाँ को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले हुमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ा और माँ को मेडिकल नेबाकू सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी। रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लै पलाइथिले बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटिथिला। बस कर्मचारी एपरि कामकू निंदा करिसेंती अंचलवासी। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाइकोर्ट निर्देश देते। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देते। विवाह बद को नहीं सोमालिका हाइकोर्ट द्वारस्थ होते। हाइकोर्ट निर्देश पर एवं विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी। सोमालिका कहते पावर रे थिबारु एक्शन नेउनी पुलिस। जयपुर गस्तर जाए विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ति मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ति। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ति नवीन। 113टी प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ति। 200 कोटी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ति मुख्यमंत्री। एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आगक नेबारे सहायक हेब बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। मुख्यमंत्री को पाई
बेस खुशी हेबा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देइथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ति छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ड्राइविंग बाइक को धक्का देबा परे कार घटैछि राश ड्राइविंग। Let me move on to the next question around the budget, and this is to do with the economy. The current, is the current recovery due to pent-up demand, or do you think that this will be sustained? I think it will be sustained because the pent-up demand argument was very right nearly 4-5 quarters ago, when post the Omicron we were coming back. People thought 2022 festival season was driven by revenge shopping, pent-up demand and so on. But that pent-up demand won't stretch itself for more than one season if you want to, take it that way. 2022 festival season was in its normal course and there was no exaggeration in the markets or even in consumption. So I think it has now reached a level where it will sustain itself. No, I ask this question also because the rural demand is still tepid. Looking at the commentary coming from FMCG companies in India. Also, if we look at the work under the Manrega scheme and the and FMCG results, I ask this question in this context as well. Can aggregate demand be more robust? I'm sure you observe the Indian economy as well, in all its great detail. Demand doesn't remain stable and then it doesn't remain only going upward. It does come down sometimes and does go up some other times. In fact, at that time, during the pandemic, even during the lockdown, most of us felt the rural demand is very high, and what could explain it? We thought that the farm outputs were very good, and as a result they were having quite a few money in their hand, and therefore they were able to sustain it. So that happens soon after the harvest. But rural demand even today, in terms of the people who are in the farm equipment manufacturing areas, are quite comfortable with what is going on in the rural market. It's not as if demand has affected them. So people are purchasing equipments to do their tilling or farming activities. That's one. I'm not just talking about tractors, but even the other equipments which go in. One. And second, also rural demand, which is FMCG related or your daily consumption related items. Your GST revenues, whilst I don't want to say that revenue GST going up is purely on rural, it may be urban and rural, but it means that it cannot be maintaining a sustained level if one of the segments, rural or urban, really fall down drastically. So I don't think it's worrisome, if at all, any drop. The RBI governor says that the worst of inflation is behind us. So can the RBI then take a more relaxed view of monitoring, tightening and support growth in the coming weeks and months? I realize that if I do comment, it will look as if I'm guiding the RBI or anything like that. No, broadly speaking. But I suppose yes, the way in which inflation has come down, both by RBI's action and by the government's action, and the government's action has been steady and at it for some time. So I expect, since the fall in the inflation doesn't seem to be just a momentary or a 1 month affair, it should sustain itself in the process of coming down, and therefore they should, and you're right, therefore there shouldn't be that much pressure on the central bank to keep the pace of increasing the rates. So, but the MPC will take a call. Of course. Any concern that you feel is there because of the twin deficit problems? It's not as severe as before. Yes. Yes, when exports come down, you're going to have the current account deficit. But it's also now suddenly going up as well as it was before, a couple of months ago, one. And second is also the import. Imports also keep slightly going up sometimes, but it's also coming down. If these two factors are primarily the ones which
we have to concern ourselves with. Monthly fluctuations I say. Yes. Fluctuations should not worry us, but if every month there is a steady decline and there doesn't seem to be a sign of increase or coming upward, uptick as you would say, if there is no chance of an uptick predicted in the next few months, then I think I should worry. But monthly looking at coming down and going up need not worry us so seriously. Okay. So next year the center and states will spend rupees 13.7 lakh crore as capital expenditure. By any account, it's a phenomenal number. Capacity utilization in the manufacturing sector is at about 72%. My question is, when do you think that the private sector will enter this virtuous cycle of capital spending? They are in it already, I would think. There has been a minor uptick. But I've been explaining this. I'm not sure if industry is explaining it as much, but I read it. So I keep read it in the sense my inferences based on the kind of discussions which happen. India's industry, the old India industry as well as the new, which is the IT related industry, software and so on, both old India industry and this, are transitioning also with the energy related matters, are transitioning also in the way in which their shop floors are operated. So the investment that they make is not to create one more unit of what they already have. The investment that they have to make, and therefore the conscious decision that they have to take, will now also look at not just expanding existing capacity the way it is, but also looking at bringing high technology, Web3, robotics, 3D printing and so on. So that together with moving towards more renewable energy use, making a green product of what they are making. For instance, steel industry is facing huge barriers in Europe. Now, their business of having to invest and expand now would be not to just produce more steel, but to produce green steel. So the investment there has three new dimensions which have never been into consideration earlier. Invest and produce green, produce also with the efficiencies of technology. So all this, when comes into play, when your decision making is being done, does take time and more resources. So I would want to give that advantage for India's private sector, that yes, their process is going to be somewhat more complicated in terms of taking the decision, but I think the atmosphere is conducive for that on all grounds, technology, green and so on. I'm kind of curious that while you've given a boost to capital expenditure and increased outlay to PM Awas Yojana, you've also cut the Manrega budget by almost 33% or 30,000 crore. Why have you done that? Actually, the answer lies in your own question. Okay. PM Awas Yojana is also to be done by workers in the area, rural area, who normally would have gone for, let us say, in the absence of this, would have gone for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme. Right. That's one answer, because even this has got to be done by people in the rural areas who are looking for jobs, just as Jal Jeevan Mission also goes through rural works. So they have these opportunities as well, which are coming not in a small incremental change, 6% increase, 79,000 crores for PM Awas, and also Jal Jeevan also getting a huge allocation. So these two also are there along with me. Second, Manrega is a demand-driven scheme. The more people come saying we want the job, we give them the work. So what is stated at the budget time estimate tends to keep adding to its resources or demands based on what comes from states. I need more. Then we add more to it and go to the parliament with a supplementary demand. So if you see the last 3 to 4 years, inclusive of the COVID year, naturally, yes, the BE number and the RE numbers
are so different in that the RE is much higher. And if you now go back to the last 2 years where the actual numbers are available, BE, RE and the actuals, you will see the actuals are lots more than the BE, and in some cases exactly as much as the RE, which is enhanced, or even better than the RE in increased amount when you realize it in the actuals. So you end up spending a lot more even as you're going on. So I'm a bit now worried that this is becoming a staid question. Manrega, you cut it. Just see the pattern for the last 3 years. It starts with a number at the BE, keeps going on because it's demand driven, and when the supplementary demand stage comes, it's actually a lot more. Yes. So more opportunities have been created, so that's right. Yeah, so I agree. You know, the real average GDP growth rate is 6.5% as the economic survey says. With a little more reforms, the survey posits that it could even be a little higher at 7 to 8%. Now, what is the realistic and the desirable sort of growth rate for India if it were to become, you know, the third largest economy in the world by the end of this decade? Desirable is one thing, but that desirable number will have to be tempered down by the global realities. The kind of uncertainties with every economy in the world faces. I don't think any one economy is so immune that the global volatilities don't affect them. So every economy is affected, particularly for a country like India, which for at least 2 critical items entirely depends on imports: fuel, fertilizer. So when you're looking at importing that many big ticket items, your uncertainties are lots more and lots more pronounced. But even provisioning for that and building a budget, we have definitely ensured that we will be not as much affected by such uncertainties as would any other country be. And therefore the numbers that we've given for the growth is very realistic. Right. You know, one thing that struck me this time when I was listening to your budget speech was the absence of any mention of disinvestment or asset monetization. Why was that? You know, why has that at least seeming to take a back seat in the last year or so? No, it is still there in the budget documents. Right. It may not have been a part of my speech, but it is in the appendix to the speech. It's also in the rest of the documents where we give the actual numbers and the activities which are going on and so on. See, the cabinet has after all taken a call that certain companies will have to be privatized, and that motion has the approval of the authority concerned, which is the cabinet. So the process goes on. But of course, because we'll have to also see when is the best time for it to be done, given the fact that we've already done the homework and kept it ready for just going out to the market, this consumes a lot of time, this preparatory time. Absolutely. Yeah. Post that is when we literally watch out for the market and then put it out. So both the factors, preparation and best time in the market, influence when you put it out. The process is on many of these items. So you're saying it's a question of timing. The commitment to privatization remains as strong as ever. Absolutely, particularly on those where the cabinet has already given the go-ahead. So you'd given last year, you'd spoken about the privatization of 2 PSU banks. What happened to that? Have you identified the banks? Is the process on? This is what is happening. The process is on. The amendments will have to happen in the Act, right, and then also look at the market, and then it'll have to go through. So it is very much on. Of course it's on, because the cabinet has given the approval. Right. So Nirmala ji, the export sector is suffering because of slowdown in major markets. What are the options to mitigate the impact of weak international economies for us today? See, it has two-sided problem. One, you have to make up for those handicaps that Indian exporters face, whether in logistics, whether it is the cost of electricity, or whether it is any other inherent handicap that they may have in terms of labor or in terms of the place they are located in and so on. So for these inefficiencies because of certain handicaps, it is necessary to give them some kind of a redressal
in the sense give them some incentive, or the RODTEP like scheme which is already on. So that's one thing. But it's also the usual way in which you would say, if a market is difficult, look for newer markets. If a market is difficult, see what you want to do about making yourself attractive for that market. You do road shows, or you spend money in branding yourself, or you appoint such agents who will tell us about the tastes in that and preferences in that market and so on. And looking for another market, you will obviously spend some money and go on road shows, open up avenues there. But today, the typical problem that you face, not just you, meaning Indian exporters, but many face, is the lack of demand in those markets because of recession, which are normally our marketplaces where we send our products, whether it's your textile, whether it is your diamonds, whether it's your gems and jewelry, whether it is your tea, whether it's your basmati rice, and so on. So I'm taking those which are symbolic of India. There are others, components, auto components, electronic parts, which you very well manufacture today. So when the recession has hit these economies, and when I say these economies, not just those in which you're present, but even for the newer markets which you might otherwise aim at, all of them are hit by it. So that's where the problem gets even more compounded, and we'll have to work together with the exporters to see how best we can help it. मरीगला मानविकता महिला यात्री स्वास्थ्य गुरुतर होबारु रास्तार ओह्लैदेले बस कर्मचारी बस्रु ओह्लैबार किछि समय पर महिला यात्री मृत्यु होइछि। पुअर आखि सामने चलीगला मार जीवन। एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथरे। गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँवर सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हस्पिटाल नेउथिले। गाँ को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले कुमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ा और माँ को मेडिकल नेबाकू सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी। रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लई पड़ाई बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटी। बस कर्मचारी एपरी काम को निंदा करिसेंती अंचलवासी। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाइकोर्ट निर्देश देइछंती। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देइछंती। विवाह विवाद को नहीं सोमालिका हाइकोर्ट द्वारस्थ होते हाइकोर्ट निर्देश पर एवं विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी। सोमालिका कहते पावर रे थिबारु एक्शन नेउनी पुलिस। जयपुर गस्तर जाई विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ती मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ती। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ती नवीन। 113टी प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ती। 200 कोटीर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ती मुख्यमंत्री। एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आगक नेबारे सहायक हेब बोली मुख्यमंत्री कहछन्ती। मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी होगा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देइथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ती छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ट्रैफिक बाइक को धक्का देबा परे कार घटैछि राश ट्रैफिक। सामना को आसिछि अति विभत्स दृश्य। कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना परे फसी जाइथिला। प्राय 4 किमी बाट कारटी द्रुत बेगरे माडी चलिथिला। कार पछरे बाइक ठाकिबा परे सेथुरु बाहरुथला निया झुल परिकणिका। कारटी को पीछा करी बाइक चालक वीडियो शूट करथिले। ए दृश्य देखिले आपनक मनर को आसीजिवो फॉर्मूला 1 कार रेस दृश्य। गुरगांव सेक्टर 65 रे घटना घटी। पुलिस सूचना अनुसार ए दुर्घटना रे केही आहत होई नांती। केन्दुझर बलानी थाना हादत मृत्यु घटना रे कार्यानुष्ठान बदलले बड़बिल थाना आईआईसी राजेंद्र स्वाई। राजेंद्र को केन्दुझर जिला पुलिस मुख्यालय को बदली कर जाइछि। ए सहित India's trade deficit with China has hit $100 billion in 2022, $100 billion in 2022. Imports keep rising, exports to China are falling. Is this situation acceptable to us? How do we really reverse this trend? No country would want its exports to languish and imports to
balloon with any trading partner. But the issue has two-pronged answers. We should be conscious not to have to consume things which come, overly from only one destination. But that doesn't mean I'm imposing any view. We should also be conscious of buying it from elsewhere if it is necessary at all. And for India's exports, it has to also look at ways in which market can be expanded in that territory or in any other geographical jurisdiction. So it is always a twin game. It's like a pair of scissors. You have to look at both the sides. What do you make of this growing clamor, especially in some opposition ruled states like Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, to bring back the old pension scheme? In fact, Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis ji, has also spoken about this. He said he'll look into the matter. What is the government's view on this? See, when I talk about government's view, I don't want to speak as though this government view or that government's view. Who, after all, implemented it for the first time? After the decisions were taken at different layers of officialdom, the political dispensations which brought this in was not just NDA. UPA was actively those who brought it forward. The entire question of introduction of OPS, new pension scheme, was during the Congress's period. They didn't at that time talk about rollback. They didn't at that time talk about any, bringing the old system back or anything of that. So now, if without adequate looking into of what it means, are we paying the current generation of pensioners by loading it onto the future generation? And how far, because in government the arguments will quickly come back to you saying, but when government borrows, it's also leaving a burden on the future generation and so on. But that's the argument. Would we all look at what is a reasonable balance? Would we look at what is it that we are leaving for our generations to come? Yes, you will have to have an economy running, you will borrow to a certain extent. But unless we have a complete understanding of this, the fiscal implication, the fiscal health of the state, not just today, for the next decades, to rush to a conclusion may not be. Right. And I was glad to hear in one of the book release programs that I attended, Sri Montek Singh Aluwalia talk about it. It's not I'm taking up something which emerged out of a private conversation. Right. In a book release, publicly, when asked, he did respond. So it's not as if now we are talking on political lines. We have to talk on Indian economy, its strength, not just Indian economy as Government of India, but every state's economy, and then take a call on it. That's right. Let's move on to the personal tax front. I think it is one thing that has really wowed everyone, wowed the middle class, your core vote bank also of the BJP. You want obviously people to move to the new tax regime. So by when will you then look at phasing out 80C and 80D deductions? Because that's really the core of investments, healthcare. When will this happen? What is your time frame to sort of move to the new tax regime entirely? No, I'm not given myself a time frame. I'm more looking at it to make sure every Indian citizen makes his own choice, her choice. It's one thing for me to say I'm bringing in a better system, which is going to be less complicated, in fact, least complicated, which also is going to give you a rate which is going to be reasonable for each one of our levels of income, and make it attractive therefore for compliance and also for the rate. I pay less tax there. But it's another thing to have a system which is going on, where unfortunately most
I don't want to criticize anybody. Unfortunately, the impression is I have so many exemptions given, which incentivizes me to save for insurance cover, for medical cover, for even saving for better interest earning that I can have, and so on. I don't want people there to think that I've denied them that. Please if you want to have it that way. But it's not just one government or the other. In general, the philosophy that governed it was you'll have all those exemptions and you'll feel tempted to have yourself cover, insurance cover, give yourself insurance cover or savings or whatever. But your tax rates were so high. Yes. So it's nice to give you some incentives, but good enough for me to have a big return in terms of the tax that I collect. Yeah. But whereas what I'm giving you now, which was introduced 2 years ago, this is the second regime, and Prime Minister was very clear that taxpayers should know actually what they're paying and exactly feel comforted that they're not paying much, and actually bring in rates down, make it simple so that anyone sitting at home should be able to file their returns and know, and that's the end of the story. I don't need to keep immense documents and so on. So we brought that in, and steadily we are making it attractive, but not forcing anybody to get out of the exemption regime. But the fact remains there that the rates have been very high and you've still got some discounts so that you can go with your... So how many people do you think will migrate? Any sense that the government has? I'm more talking about the layers which are covered by these beneficial tax rates. I would think in that layer at least 50% will come 50%. That's a big number. And what is the current number? Any idea that the government has of that? Yeah, I have a number, but I don't think I can off the cuff say it. Okay. This is a slightly broader question. You've been extremely successful in widening the tax base. As the base has widened, the tax slabs tend to go down. Do you think that could you consider in the long run bringing the top tax slab to 25%, just in line with your corporate tax rate, top corporate tax rate? Would that be the vision going forward? Well, eventually the tax rates must be absolutely low and the assessee friendly. Citizens cannot be burdened with taxation. But that is when I have widened my base sufficiently. It can't be that few people pay and they pay huge amounts and I have to run the system. It shouldn't be that. It should definitely be wider the base, lower the tax, and therefore achieve both the objectives of collect your tax from those who can pay it, but collect enough so that you are able to run your schemes. The new income tax regime, there is a feeling that it disincentivizes savings. How do you react to that? I gave you the logic. Yeah. I can always incentivize you, go for insurance, go for savings, go for this, and come up with a fantastically high rate and say, all right, I've given you discounts, but I need my money. Instead, I'd prefer a completely acceptable and lower rate of interest, lower tax rate, and people to feel that, all right, I'm not being burdened, there's no reason for me to avoid or evade the tax and pay it up. And you have the choice of deciding your own saving instrument, right? You're not... I was going to say, I'm on the side, or I belong to that school of thought which says, if the taxpayer is left with more money in his hand because we collect less tax, I would think that he's the best judge to decide where he has to put his money, and he doesn't need an incentive to run his family or to protect them from ill health or to not bother about his future, save for future and so on. So why do we want to underestimate our citizens? If I give very high tax rate, then I also have to tempt them to say, all right, go about saving it because I'm giving you some incentive here. But I've left more money because I tax you less. You are the best judge to do what you want with your money. Some of the experts feel that it was a rather bold move for you to reduce the rich tax from 42.7% to 39% in what is an election year. But is it that you've given some and taken away from the other hand as well, and so it's a zero-sum game in a sense?
Where have I taken away? The real estate, earlier you could move money to real estate, now the cap is 10 crore, beyond 10 crore there is no, there are a couple of... That's not taking away. It is like saying, I mean, beyond 10 crore of a house that you have, why do you want to also expect favors for a second or the third or the fourth? Correct. And there have been instances, I might say, without revealing any names or any kind of, people who bought house, sold house, made immense profits out of it, but who still enjoy these sort of, 10 crore house, I should still get my benefits from the government. So the bold move in an election year. But I'm not give and take there. Okay. I've not given away something and taken away something. I'm only giving. Okay. I've not taken away anything. So that's as I said, a bold move in an election year, because people don't expect you to do it. No, but if you're referring to the surcharge, which I brought down, and which therefore is going to give benefit to some of the upper middle class and high net worth individuals, That's it. it's also because the Indian tax system should be seen for not being so harsh. With your 30% surcharge, you were reaching a total tax of 42 point something, 75 or something. 42.7%, yeah. 42% of tax taken away. Even a person who's that, talented enough, skilled enough, and is paid very well for his contribution to the firm and has a good earning. Yes. Take away nearly 42.7. Doesn't make our system look fair. Right. And therefore we brought it. MNCs are looking at a China plus one strategy. So you've also spoken about it in your budget speech. We've seen that the manufacturing and export of mobile phones from India has really gone up. Which are the other sectors in manufacturing that could benefit out of this China plus one? Well, the PLI that we've given out with 13 sectors is definitely a China plus one list, which is sunrise sectors, which are important sectors for India to have its own strength. That's exactly the China plus one kind of a... Okay. There is a funding winter in the startup ecosystem. In fact, some of the startups that were doing really well have come off their valuation highs. What is the government specifically planning to do about this? This government has done a lot for the startup community in the last few years. So what next? What would you do? But I think the funding is also waiting to see more innovative startups claim for the next stage. It's not as if it's a funding winter, or it's not now a scarcity of funds. It's more funds seeing the opportunity that is available for them. And they want to look at better options also, even among the startups. Right. And India, which started in 2016 in a major push, I'm sure startups existed before, but the push happened with the Honorable Prime Minister in 2016 announcing a policy and subsequently coming up year after year some concessions. So they also go through a cycle, one round done, the next round of good options. They are there, they will, I'm sure, be available. Nirmalaji, you will be meeting the G20 finance ministers and central bank governors later this month in Bangalore. What is your message to them, and what are your main agenda items that you will take up and highlight? The agenda, of course, is by now fairly well determined. We will be talking about the debt situation globally, because many countries which were even middle income countries have suddenly got into debt traps, and those traps are really vicious traps. They are not able to come out of it. Now, during the pandemic, debt servicing, there was a scheme which the IMF and also looking at the G20 formulation, there was a plan which had come, debt servicing, and many of these countries didn't have to service their borrowing for a certain period because of the pandemic, and there was a call for extending it. It was extended. But we are also making sure that enough monies are available with these institutions, multilateral institutions, so that they are able to better respond to situation, have better leverage over the funds that they already have with them. So these are matters of discussion: debt servicing, also debt financing, multilateral finance institutions and their reforms, about which Honorable PM
has spoken several times, UN reform, IMF reform, WTO reform, World Bank reform and so on. So we'll be discussing many of these. Also looking at a global kind of a SOP to be available, to be agreed upon for regulating crypto assets, whilst recognizing the central bank as the authority for issuing cryptocurrency. The rest of the assets which are being created outside, which are using very useful financial technologies, even those will have to be discussed, because regulation cannot be done by any one country singularly. It has to be a collective action, because technology doesn't brook any borders. Nirmala ji, you have to answer this question, specific question. You've presented 5 budgets so far. Which has been the most memorable budget? Very difficult to say. Each one had its own challenge, but well, each one has its own charm. Okay. Now, one last question. After months of hard work, you managed to put this whole thing together. How does Nirmala Sitharaman unwind? What do you do? Do you ever take a break? What do you do to unwind? Well, listen to a lot of music. What music do you listen to? Classical Indian music, both Hindustani and Carnatic. I sleep well every day. I think we should be in a happy routine. We should be in a happy place that the finance minister of the country sleeps well. Absolutely, because we have a good prime minister who's got that kind of a vision, and the strength of the leadership that he brings along helps the country. So yes, that too. Good sleep. Thank you, Nirmala ji, for your time. Thank you for the first interview to a private channel and a streaming service. And more importantly, congratulations on a very well delivered budget. Thank you so much. Thank you. Thanks for giving me this opportunity. ମରିଗଲା ମାନବିକତା। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଦେଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଅର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଗଲା ମାର ଜୀବନ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ସହରର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମତୋଳା ଗାଁର ସୁଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜର ମା ରୁନୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଥିଲେ। ଗାଁକୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଫେରିବା ବେଳେ କୁମା ଗଞ୍ଜାମ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରୁନୁଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମାଆକୁ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ସୁଜିତ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲେ ବି ଶୁଣି ନଥିଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶନି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଳାଇଥିଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने को हाइकोर्ट निर्देश देते। सोमालिका जो थाना एतला देवे एतला को पंजीकरण करने को कोर्ट निर्देश देते। विवाह बद को नहीं सोमालिका हाइकोर्ट द्वारस्थ होते। हाइकोर्ट निर्देश पर एवं विधायक विजय शंकर अड़ुआ बढ़ी। सोमालिका कहते पावर रे एक्शन नेउनी पुलिस। जयपुर गस्तर जाए विक्रमदेव कॉलेज प्लाटिनम जुबली समारोह में जोग देइछन्ति मुख्यमंत्री। विक्रमदेव कॉलेज को विश्वविद्यालय कर मुख्यमंत्री घोषणा करछन्ति। या सहित कोरापुट जिला 1596 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देइछन्ति नवीन। 113टी प्रकल्पर शिलान्यास सहित उद्घाटन करछन्ति। 200 कोटी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सहित 1400 कोटी टंकार प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करछन्ति मुख्यमंत्री। एसबू प्रकल्प कोरापुट जिला को आग को नेबारे सहायक हेब बोली मुख्यमंत्री कहछन्ति। मुख्यमंत्री को पाई बेस खुशी होगा सहित कॉलेज को राज्य सरकार विश्वविद्यालय मान्यता देथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ति छात्र छात्री। गुरगांव रे राश ड्राइविंग बाइक को धक्का देबा परे कार घटैछि राश ड्राइविंग। सामना को आसिछि अति विभत्स दृश्य। कारण कारटी रे बाइकटी दुर्घटना परे फसी जाइथिला। प्राय 4 किमी बाट कारटी द्रुत बेगरे माडी चलिथिला। कार पछरे बाइक ठाकिबा परे सेथुरु बाहरुथला निया झुल परिकणिका। कारटी को पीछा करी बाइक चालक वीडियो शूट करथिले। ए दृश्य देखिले आपनक मनर को आसीजिवो फॉर्मूला 1 कार रेस दृश्य। गुरगांव रो सेक्टर 65 रे घटना घटिछि। पुलिस सूचना अनुसार ए दुर्घटना रे केही आहत होई नांती।
केन्दुझर बलाणी थाना हाजत मृत्यु घटना रे कार्यानुष्ठान बदलले बड़बिल थाना आईआईसी राजेन्द्र स्वाई राजेन्द्र को केन्दुझर जिला पुलिस मुख्यालय को बदली कर आनंदपुर टाउन सदर एवं हरिचंदनपुर आईआईसी को बदली कर गत नवेम्बर 28 तारिख में बलाणी थाना लसरता गाँव दंपति लक्ष्मीधर आपट मंजुलता आपट को गुली कर हत्या घटना रे अन्यतम अभियुक्त मिलू बारिकर पुलिस हेफाजत में मृत्यु होता। छुईदेले भल हो जाऊँ रोग बाबा टिके छुईदेले भक्त होती सुस्थ एथि बाबा पाखरे लगी लोकों लंबा लाइन बाबा कानरे निजर समस्या कहते लोके किए निजर पारिवारिक समस्यार समाधान चाहूँगी ताऊ कहीं निज पिलार उज्जवल भविष्य कामना करी बाबा शरण पशिछि आ सबू शुणा पर बाबा उपाय बतैवा सहित विभूति देउछंती से बाबा होउछंती प्रभुजी दास खंडगिरी मेला रे बाबा प्रभुजी शरण रे शह शह श्रद्धालु। मरीगला मानविकता महिला यात्री स्वास्थ्य गुरुतर होबारु रास्तार ओह्लैले बस कर्मचारी बस ओह्लैबार किछि समय पर महिला यात्री मृत्यु होईछि। पुअर आखि सामने चलीगला मार जीवन एभली दुखद एवं हृदय विदारक घटना घटी गंजाम सहर 16 नंबर जातीय राजपथरे गंजाम जिला पाटपुर ब्लॉक पद्मतोला गाँव सुजित स्वाई निजर मां रुनु चिकित्सा भुवनेश्वर एम्स हस्पिटाल नेउथिले। गाँव को एक घरोई बस रे फेरिबा बेले कुमा गंजाम रास्ता मझिरे रुनु शरीर असुस्थ हो पड़ा और माँ को मेडिकल नेबाकू सुजित जेते काकुति मिनती होइथिले भी शुणी नथिले बस कर्मचारी रास्ताकड़ शनि मंदिर निकट में ओह्लै पलाइथिले बस कर्मचारी और बस रु ओह्लैबार किछि समय पर रुनु मृत्यु घटिथिला। बस कर्मचारी एपरि काम को निंदा करिसेंती अंचलवासी। बढ़िला तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास अड़ुआ बांधवी सोमालिका दास एतला पंजीकृत करने स्वास्थ्य मंत्री नब दास को गुलिकांड घटना गोपाल क्वार्टर्स मिला किछि गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र हाथलेखा कागज और डायरी मिलिथिबा सूचना पाइखाना टांकी मिलिथिबा चिठी से लिखिथिबा मानिले गोपाल। गुलीमाड़र ब्रह्मपुर कनेक्शन गोपालंकर बड़ भाई सत्यनारायण को जेरा पर छाड़देला क्राइम ब्रांच बंधु प्रदीप को पचरा उचरा बसस्टाण्ड जाई ड्राइवर ठारू तथ्य संग्रह ब्रह्मपुर घरे ताला जलेश्वरपुर घरर दुआर बंद। प्रभु जगन्नाथ जानिथिबे नवदास को हत्यार कारण घटनार 6 दिन पर प्रोबाबिलिटी थ्योरी कथा उठाई मुह खोलिले डीजीपी कहले पूरा घटना सामना को आसवाक लागिब समय जस्टिस दास को मॉनिटरिंग रे चलीछि तदंत एसपीजी रो सुरक्षा कवच को फॉलो करिबो ओडिशा पुलिस। रेल बजेट रे एथर ओडिशा को 10,012 कोटी सूचना देले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्य सरकार दावी करथिले 8,400 कोटी राज्य में वर्ष निर्माण हेब 280 किमी रेलपथ त्वरान्वित हेब काम। जयपुर विक्रम देव स्वयं शासित कॉलेज छात्र छात्री को जीवन दर्शन वार्ता देले मुख्यमंत्री भल पाठ और समाज सहित जोड़ी हेबाकू आह्वान कोरापुट 1600 कोटी प्रकल्पर शुभारंभ समावेश रे तारांक मुहरे जय नवीन। संस्कार प्रक्रिया जारी उपरे केंद्र फोकस बजेट पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहित नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी साक्षात्कार कहले पीएम विकास योजना द्वारा हेब बड़ परिवर्तन बजार उपरे बजेट अनुकूल प्रभाव। विपदरे तिर्तोल विधायक विजय शंकर दास बांधवी सोमालिका सानी अभियोग आधार हेब तदंत मामला पंजीकरण पर हाईकोर्ट को निर्देश पर केस रुजु करी पुलिस तदंत आरंभ जगतसिंहपुर एसडीपीओ कहले आईन अनुଯାयी हेब कार्यानुष्ठान।
आसिवा संपूर्ण खबर को गुमर खोलिब गोपालंक डायरी। स्वास्थ्य मंत्री नब दास गुलिकांड घटना गोपालंकर क्वार्टर्स रु एक डायरी मिलिबा परे एहाकु नै छानभिन आरंभ करिछि क्राइम ब्रांच। डायरी रु किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिली पारे बोली क्राइम ब्रांच कहिछि। मिलिथिबा डायरी एवं कागजपत्र एक बड़ प्रमाण बोली क्राइम ब्रांच पक्षरु सूचना दिया जायछि। या सहित क्वार्टर्स रु गोपाल दासकर किछि हाथ लेखा कागज मध्य मिलिछि आ जहाकु नै मध्य क्राइम ब्रांच तदंत जारी रखिछि। सबटे पाइखाना टांकी मिलिथिबा चिठी गोपाल लिखिथिबा मानिछंती बोली क्राइम ब्रांच पक्षरु सूचना दिया जायछि। गोपाल निजे चिठी लिखिथिबा से मानिछंती। पाइखाना टांकी 20 रु अधिक कागज टुकुड़ा मिलिथिला जेउथिरे नाली रंगरे किछि लिखा जायथिला। ए चिठीर सत्यासत्य जानिबा पई हैंडराइटिंग ब्यूरो को पठाजिबो। गुलिकांडर 6 दिन रे तदंतकारी टीम गोपाल को ब्रजराजनगर रे थिबा सरकारी क्वार्टर को नहीं जाइथिले। सेठारे बड़ धरणर छानभिन मध्य होइथिला। तदंतकारी टीम रे थिले क्राइम ब्रांच रो अधिकारी एवं फोरेंसिक टीम सदस्य। गोपालंकर क्वार्टर्स रे हत्या को नहीं किछि षडयंत्र होइथिला कि मंत्री नवदास को गुली करी हत्या पई गोपाल क्वार्टर्स देइथिला कि क्वार्टर्स रे होइथिला कि किछि रणनीति से सबुक नै जांच चलीथिला। प्राय 3 घंटारू अधिक समय जांच करिबा परे क्वार्टर गोपाल को कार्यरत थिबा गांधी चौक फांडी को निया जायथिला। सेठारे मध्य किछि समय जांच करिबा परे फांडी रे जबत थिबा एक कार को तन तन करी मध्य जांच करा जायथिला। शेषरे गाड़ी रो किछि मध्य कागज पाइथिला क्राइम ब्रांच। नवदास को गुलीमाड़ मामला रे ब्रह्मपुर कनेक्शन केतेबेले ब्रह्मपुर होटेल तो आउ केतेबेले गोपालंकर ब्रह्मपुर घर और परिवार को नहीं चर्चा। आउ एबे ब्रह्मपुर रे गोपालंकर बंधु को पचराउचरा करिछि क्राइम ब्रांच। बसस्टाण्ड जाई ड्राइवर को ठारू तथ्य नहीं टीम। सबरे गोपालंकर ब्रह्मपुर घरे ताला पड़िथिबा बेले जलेश्वरपुर घरर दुआर खोलुनी। नवदास को गुलीमार घटना ब्रह्मपुर और जलेश्वरपुर रे झाड़ बुहाउछि क्राइम ब्रांच। जनक परे जणे एभली प्राय 15 जन को पचरा उचुरा सरिलानी। हेले कौन हाथ में लगी से नहीं किछि कहूनी क्राइम ब्रांच। ब्रह्मपुर राजस्व डाक बंगलारे गोपालंक बंधु प्रदीप बेहेरा को पचरा उचुरा करिथिला क्राइम ब्रांच। गोपालंक सह तांको संपर्क केबेठारू तांकर मानसिक अवस्था किभली थिला लोकंक सहित किभली आचार व्यवहार थिला से नहीं प्रश्न करिथिले अधिकारी। गोपाल जणे भल खेलाड़ी थिले एवं समस्तंक प्रति तांकर व्यवहार भल थिला। युव बयसरू ही से पुलिस ऑफिसर हेबा पई आशावादी थिले बोली कहिसंती प्रदीप। सेपटे आउ एक टीम सिटी बसस्टाण्ड को जाई सेठारे थिबा पुलिस फांडी रे 4 जन ड्राइवर एवं 2 जन कंडक्टर को पचरा उचरा करिसंती। ब्रह्मपुर झारसुगुड़ा को केउ सबु औषध जाउथिला गोपाल बस जोगे झारसुगुड़ा जाइछंती कि एभली अनेक प्रश्न पचारिथिला टीम। आउ 2 रु 3 थर गोपाल बस जोगे झारसुगुड़ा जाइथिबा कहिथिले ड्राइवर। किंतु गोपालंक औषध विषय कौनसी सूचना नथिबा कहिसंती बस ड्राइवर। से पाठ पढ़िया समय से जन नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन होवार प्रथम उद्देश्य थिला। गणमाध्यम चर्चा हो से समय उद्देश्य थिला एवं ता सहित जड़े उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी होवार मध्य तार उद्देश्य थिला। से जड़े हविलदार जगिथिले आंगु लई गले सकाळ पचाले गोपाल दासर कोन पार्सल पत्र केबे मेडिसिन पत्र कोन लई जे आमे आम गाडी केबे पठेथाने आमे मना करदलो आमे केबे नै पचाले आपण गोपाल महापात्र जो दासंकर कोन पार्सल पत्र तुम गाडी जांच करेगी ताको पार्सल पत्र आम मु गाडी चलेबा 4 वर्ष भीतर केबे जाइनी ताको नारे केबे पार्सल पत्र आमे नैनो। सेपटे गोपालंक परिवार किंबा तांको भाई सत्यनारायणक परिवार लोके मुह खोलु नाहंती। सेपटे गाँ लोके कहिसंती जे गोपाल गरीबों को साहाय्य करने सहित गाँर उन्नति पाई हाथ बढ़ाउथिले। गोपाल को नहीं गर्व करिथिबा गाँ एबे गोपालंक पाई दुखित बोली कहिसंती लोके। से एमदिके जने लोक बाटरे जने मरी पड़थिले मते से मेडिकल नबा पई बाध्य हेबे से बंचु न बंचु कहि मेडिकल फेरेबा आनिबे से टाइप लोक आमे जा को गर्व बोली भाबुतलु आज सेटा घटी जाई तो ता पे हमें गाँ लोक समस्त दुखित आइ।
गोपाल कहीं जड़े मंत्री को गुली कले से नहीं वर्तमान सुधा कारण स्पष्ट होई नथिबा बेले गाँ लोके भी हतबाक। ब्रह्मपुर कैलाश बेहरा, न्यूज 18 ओडिया। घटना घटिबार 6 दिन पर गणमाध्यम आगरे प्रतिक्रिया रखिले आउ कहिले नवदास को कहीं गोपाल हत्या कले ताहा केवल प्रभु जगन्नाथ जानिथिबे। पुलिस डीजी सुनील बंसल यह प्रतिक्रिया एवं चर्चार विषय पलटि। हत्या को नहीं प्रोबाबिली थ्योरी पकाइछंती डीजीपी। सेहीपरि कहिछंती कि ए मामलार निष्कर्ष बाहरिबा पई समय लागिबो। गुड़ाए घटना हमारे जीवन रे एमटी को हुए जे थरे कि प्रोबेबिलिटी ता 0.0001% थे से कहीं भावी न थे कि से एमटी को घटना है। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को छाड़ी करी अन्य कहीं मनुष्य जाने पारे वो नहीं कि एमटी भी है पा। शुणिले तो स्वास्थ्य मंत्री नवदास हत्या को नहीं कौन कहले पुलिस महानिर्देशक सुनील बंसल। नव को गोपाल कहीं मारिले से ने प्रोबाबिलिटी थ्योरी कथा उठाई डीजीपी कहते एमिति किछि घटना आम जीवन हुए जार प्रोबाबिलिटी 0.0001% थिबो जाकि घटना रे होछि। आ एमिति किछि घटना घटे यार कारण केवल प्रभु जगन्नाथ ही जानिथिबे। तबे एठी प्रश्न उठुछि जदि हत्या संपर्क में प्रभु जगन्नाथ जानिथिबे ताहाले पुलिस तदंत करिबो कोन? पुलिस जानिबो केमिति काहे हत्या कले गोपाल? सेपरि डीजीपी कहते कंप्लीट कंक्लूजन को आसवा को टिके समय लगिबो। जस्टिस दासंक मॉनिटरिंग रे तदंत चालू रहुछि। प्रथम दिन रु तदंत पय निर्देश दिया जाउछि। सब जिनिस 2-4 दिन रे कहि हेबो नाही। जो एक टाइप रो क्राइम थाए से थरे सब जिनिसटा 2 दिन भीतरे के 4 दिन भीतरे के ही जानी पारिबे नहीं और पूरी जानवा पाई आमे जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी अच्छी ताको हमें संपर्क करिछु। सेहीपरि डीजीपी कहते घटना को नहीं पीएसओ विरोध में प्राथमिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। परवर्ती कार्यानुष्ठान तदंत पर नियाजिबो। अभियुक्तों को गिरफ्त करिछि पुलिस। एभली घटना जेभली पुनर्बार न घटिबो सेथिपई आगुआ सचेतन होइछि ओडिशा पुलिस। एथिपई सेंट्रल प्रोटेक्शन ग्रुप बा एसपीजी सुरक्षा कवच को आगु फॉलो करिबो ओडिशा पुलिस। तेबे मंत्री को सुरक्षा व्यवस्था जेमिति हेबा कथा 29 तारिख दिन सेमिति ही मंत्री नवदास को सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर जायथिला। मो निज जो केंद्रीय गृह मंत्रालय अच्छी ताको अधिकारी संग कथबार्ता कली से माने कहले कि भल तदंत पाई सेंट्रल गवर्नमेंट रो पूरा साहाय्य जहाँ दरकार हबो खूब शीघ्र हमारो जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी से किसी टीम मध्य आसी पारे सीएफएसएल रू किसी टीम आसी पारे। हमारो जो निजरो टीम अच्छी स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी टीम ऑलरेडी से ठीक अच्छी। तेबे घटनार 6 दिन पर गणमाध्यम रे प्रतिक्रिया रखिछन्ती डीजीपी सुनील बंसल। ए घटना नहीं केंद्र गृह विभाग सह जोगाजोग करी सेंट्रल फोरेंसिक टीम रो सहाय्य निया जाउछि। दरकार पड़िले केंद्र गृह विभाग रो भी सहाय्य निया जिवो। भुवनेश्वर कैमरामैन आलोक मिश्र सह दीपक सामल, न्यूज 18 ओडिया। जयपुर रे छात्र छात्री को जीवन दर्शनर वार्ता देइछन्ती मुख्यमंत्री। विक्रमदेव स्वयंशासित कॉलेजर 75 वर्ष पूर्ति उत्सव में जोगदे भल पाठ पढ़िबा एवं समाज सहित जोड़ी हेबाको आह्वान देइछन्ती मुख्यमंत्री। सेबडे कोरापुट पाई 1596 कोटी टंका प्रकल्पर शुभारंभ करा जायछि। आ समावेश रे तारांक मुहरे थिला जय नवीन। भल पाठ पढ़ंतु एवं समाज सहित जोड़ी होई रुहंतु। निजर तथा निज परिवार एवं ओडिशार स्वप्न पूर्ण करने पई उद्यम जारी रखंतु। जयपुर विक्रमदेव स्वयंशासित महाविद्यालय 75 वर्ष पूर्ति उत्सव में जोगदेई यह कहिसंती मुख्यमंत्री। स्वयंशासित महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषणा को स्वागत करथिले छात्र छात्री। एही घोषणा पई छात्र छात्री मानक मध्यरे खुशीर लहरी खेली जायछि। नवीन पट्टनायक कहते जे विक्रमदेव विश्वविद्यालय रे एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण करा जिवो। ऑडिटोरियम 1000 आसन विशिष्ट हेबो एवं सेथिपई खर्च हेबो 8 कोटी टंका। पिलाए पढ़िले आगकू बढ़िबे एवं युव समाज उपरे तांकर पूरा आस्था रहिछि बोली प्रकाश करी मुख्यमंत्री कहिसंती। ए ग्लोरियस इंस्टीट्यूशन रे एक मॉडर्न ऑडिटोरियम
କରାଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଜୁକେସନାଲ, ସୋଶାଲ ଓ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ସଶକ୍ତ କରିବ ତ ଶିକ୍ଷା ହିଁ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ଆମର 5T ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ତା ପ୍ରତି ରହିଛି। मुख्यमंत्री कहते जे भित्तिभूमिर विकास जरिया कोरापुटर विकास ପାଇଁ काम करा जाउछे। गोटे गुरुप्रिया सेतु आज स्वाभिमान अंचल रे विकास नुआ धारा आनी पारिछे। भित्तिभूमि ही विकास धारा बोली कहिथिले नवीन। कोरापुट ପାଇଁ 1596 कोटी टंकार प्रकल्पर शुभारंभ करा जायछे। एथिरे 207 कोटी 80 लाख टंकार प्रकल्प उद्घाटित होइतिबा बेले 1378 कोटी 40 लाख टंकार प्रकल्प ପାଇଁ भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायछे। खुशीर कथा आजिपुर कोरापुट जिला ପାଇଁ 1600 कोटी टंकार विभिन्न प्रोजेक्ट आरंभ करागला। 200 कोटी अधिक टंकार प्रोजेक्ट उद्घाटन और 1400 कोटी टंकार प्रोजेक्ट ପାଇଁ फाउंडेशन दिया गला। तारांक मुहरे जय नवीन। जयपुर सभारे नवीन को वंदना करथिले तारा प्रसाद बाहिनीपति। मुख्यमंत्री को कोरापुट माटी को स्वागत करी कहथिले जय नवीन। नवीन पटनायक जिंदाबाद। सार पुरी जगन्नाथ मंदिर उन्नति कले गुप्तेश्वर मंदिर भी उन्नति करंतु। गुप्तेश्वर विभिन्न राज्य आसुचंदी गुप्तेश्वर भगवान को दर्शन करने सार आपण को मोर निवेदन रहा गुप्तेश्वर को उन्नति करंतु। आपण पूरी कले पूरी जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय नवीन। कोरापुट प्राकृतिक संपद रे भरपूर आउ समस्ते जेपरी सही सुंदरतार स्पर्श पाइबे सेथिपाई प्रयास आरंभ करछंती सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। बढ़िला तीर्तोल विधायक विजय शंकर अड़ुआ कारण प्रेमिका सोमालिका दास अभियोग आधार में एतला रुजु करने को पुलिस को हाईकोर्ट को निर्देश रही। पुलिस निष्क्रियता अभियोग नहीं सोमालिका आवेदन दायर करते गर्लफ्रेंड को आवेदन को ग्रहण करिसेंती हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को निर्देश पर बांधवी सोमालिका एतला आधार में मामला रुजु कर तदंत आरंभ करिछि पुलिस। बढ़िला तीर्तोल विधायकों को अड़ुआ गर्लफ्रेंड को अभियोग तदंत मामला पंजीकरण पर हाईकोर्ट को निर्देश। विधायकों सह प्रेम संपर्क बिगिड़बार प्राय 8 मास तले थानार द्वारस्थ होते प्रेमिका। विधायकों नाँ में मामला रुजु करने को पछघुंचा देउथुवा पुलिस आजिकाली कही दिन गड़ाउथुला। एबे हाईकोर्ट को निर्देश पर तत्पर हो उठिछंती थाना बाबू। तीर्तोल विधायक विजय शंकर दास नाँ में मामला रुजु पर आरंभ होइछि तदंत। केस नंबर 95/23 रे रुजु होइछि मामला। विधायकों नाँ लगी धारा 313, 376, 506, 37 IPC दफा। दीर्घ 8 मास परे विधायक विजय शंकर बांधवी सोमालिका जगतसिंहपुर थाना अभियोग करथिला परे मध्य पुलिस ए बाबत कौन